ठीक है सर, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी हम लोग वेट कर लेते हैं 2 मिनट। हाँ सर, I have added the message in the group, so let people join for 5 minutes. Shall we start? Shall we start the class? Yes sir. Can. पिछली क्लास में जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसके एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस और एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में समझा था. आई थिंक दिस इज द टाइम दैट वी शुड dig deep into the questions of regenerative medicine, biomedicine.
and genetics and its ethical as well as its social consequences. And ये आपके subject का भी close part है, एक important part है. And before starting the topic, I think मुझे लगता है कि एक आप लोग एक काम कर सकते हो, ethics and governance का एक मैं इसमें शेयर कर दूंगा इस ग्रुप में. एक इंटरेस्टिंग नोट्स मुझे मिले हैं, बट वो किंडल एडिशन है, उसमें किंडल पे है. तो आप लोग में से कौन लोग कितने हैं जो किंडल कोई यूज करता है? करते हैं सर यूजुअली. तो उसमें आई थिंक, so is there any ways that like I can buy that and somebody can have a photocopy of that? People can have a photocopy. Copying from Kindle is actually difficult because of the security concerns. Security concerns. Even Kindle will not be having a PDF version, that comes in EPUB version. So so that is the problem. Let me see. लेकिन ये जो अभी 2 आर्टिकल्स हैं जो मैंने भेजे भी हुए हैं, जिसमें एक तो ल्यूसी फ्रिथ का है, which is about reproductive technologies. Just give me a second. Yeah, which is about reproductive technologies and ethical concerns. And the second one is biotechnology, bioengineering, genetic engineering, and its ethical component. So, has anybody seen these 2 articles or any one of them? I've shared those articles, no? Sameer? Yes, sir. Yes, sir. I did. So, has anybody gone into, like, glossed over it? I'm not saying he has gone deeply, but has explored any of the... Yes, sir, I did. So, these 2 articles are very closely related. In fact, the Lucy Frith, who is a philosopher, bioethicist, because the one who deals with the question of bioethics, how ethics and biology are intertwined. So these 2 articles are quite closely related, but still there are differences. The first article goes deep into the question of what biotechnology is, what bioengineering is, and what are its medical as well as ethical consequences. So biotechnology, if we start with the first article and then goes to the reproductive technology wala article, the first article talks about initially that, there is a serious ethical dilemma, the question of ethical dilemma, which humanity is facing right now. And that ethical dilemma is about the impact of these growing technologies that are actually growing at an exponential rate. And these technologies are biotechnologies, bioengineering, stem cell research, artificial intelligence, that we discussed last time, and cloning, very important subject, cloning. So to start with, what biotechnology is very simple. To put it very simply, it's the application of basic biological sciences with the technological advancements, especially computer science, information technology, and all, and to apply that to human survival and human flourishment. For instance, if I give you an example, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि green revolution happened in 1960s. So if I ask why green revolution happened in India, what was the fundamental need for such kind of technological advancements in agrarian setup? What was the need? Can anybody answer? What was the need for green revolution? To increase the productivity. Self-reliance था एक तो कि खुद अपने देश में बनाना और फिर उसको वो करना ताकि हम कहीं से इंपोर्ट ना करना पड़े उस चीज को. या बिल्कुल सही कह रहे हो विनय. ये एक बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि फॉर इंस्टेंस आप लोगों को पता होगा कि यूएस की तरफ से एक प्रोग्राम था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, PL4 समथिंग प्रोग्राम. So that program, according to that program, the worst quality of wheat that used to get rejected in United States of America used to be supplied to Indian masses, so that there was no hunger. The hunger of Indian population can be satisfied because India was facing huge trouble, especially in
fulfilling the basic needs of the people, which is about, basic food. So usko fulfill karne ke liye, there was a strong need to bring in technological advancement. And what was Green Revolution primarily? Green Revolution was nothing but a kind of a genetic engineering, not on humans, not on animals, but on seeds. So high yielding variety seeds were conceptualized by scientists, biotechnologists, bioscientists. And these high yielding variety seeds were able to produce the same variety of cereal and all, but in large proportions. For instance, if wheat that was produced organically in a certain acre of land, a certain amount of wheat was produced prior to Green Revolution. But after Green Revolution, in the same amount of land, with the same acre of land, 50 times more, or at least 10 times more production happened. So to increase the productive capacity of the farmlands so that majority of the population can be, their hunger can be satisfied, that was seen as an imperative, or that was seen as a rationale for such kind of technology. But the flip side of the argument is that it was not actually the need. It was primarily the need of the industry, need of the capitalist industry to bring in such technologies so that a certain kind of agrarian capitalism can be brought in. Are you getting the point? So the debate was, you can stop me anytime whenever you feel that you are not able to understand. Sameer, are you getting the point? Yes, sir. So अगर इसको हिंदी में भी बोलूं तो इसमें क्या था? बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के जो प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे स्वामीनाथन हो गए या और सारे, आई एम नॉट giving a critique of green revolution. Is just I'm trying to give you a picture that there are two sides to it. One side, definitely we all know कि इंडिया में फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कम था, जितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही थी उसके हिसाब से उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं था, so that India was able to, in that sense, India was not able to provide basic minimum food to the majority of the population. This was the rationale, this was the argument given in support of the technological intervention in food technologies, in growing of the kinds of wheat and rice that produces that produces more amount in a short in a small amount of land, in a small acre of land, exponential amount was produced. That was the rationale given. But the other side of the argument is that India में जब organic farming भी होती थी, तब भी India would have survived. Indian population would have survived the exponential development or growth in population. It was not the demand of the people. Rather, it was a nexus between Indian state and agrarian economy, an agrarian capitalist economy. And it was the capitalist forces and the Indian state's nexus with the capitalist forces that brought in such technologies from the West so that Indian agrarian system could be changed. So that Indian system of collective farming or even feudal logic, feudalism जो था उसको भी change करके capital intensive farming की तरफ लेके जाया जाए. That was the argument given by so many economists. But there were other arguments जो generally हम पढ़ते हैं. So it's not that one side was better or the other argument was not better. It is just that there are so many ethical sides and political sides to technological advancement. That technology per se, this is a very important point, technology is never neutral. Technology ऐसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी के पीछे कोई टेक्नोलॉजिकल एजेंसी से ज्यादा ह्यूमन एजेंसी काम कर रही है, बिकॉज इट इज द group of humans, the collective of humans that brings in technology, the technological advancement. Although there are people right now, philosophers right now, who are arguing that technology attains a level of autonomy from humans, from human society, from human collectives, and technology itself grows without full intervention of human agency. So technology itself attains a level of agency to it. And that is where technological singularity arguments comes in.
to play. Means that technology grows at an exponential rate and it is almost impossible to stop the technology because technology अपनी autonomy ले लेती है. Or human social relations, whether capitalist relations or non-capitalist relations, they tend to carry a backseat in the advent of, or in the advancement of rather, the technological advancements, that way technological advancements grow, the pace of technological advancements. So this is the fundamental background of the debate. I think let me add few more people, they are waiting. So इतना समझ आया आप लोगों को? What is the point that I'm trying to raise here? Sameer? विनय? Yes, sir. Yes. कि टेक्नोलॉजी, मैं फंडामेंटली ये बोलना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रल इन दैट सेंस. टेक्नोलॉजी हैज एन एथिकल डायमेंशन टू इट and technology is always dependent on the social relations of the society. कि social relations कैसे हैं, political relations कैसे हैं, state किस तरीके का है. So technology is dependent on humans basically. ये एक argument है. But दूसरा argument ये भी आता है कि technology जिस तरीके से grow कर रही है, technology in short span of time will be able to attain an autonomy of a sort from humans, and some people claim that it has attained autonomy from humans and it goes through its own logic, and that logic is now going to attain singularity, means everything will become technology dependent. In fact, everything is technology. What we are taking, what we are doing right now would not have been possible without technology. We all know that. But with 5G and with possibly with the advancement in quantum computation, quantum computing, the future is uncertain in that sense. The technology can become a kind of a Frankenstein monster. Frankenstein monster का मतलब होता है कि ऐसी चीज बन जाए जो हमें खा जाए, हमें हमारी सोसाइटी को खत्म भी कर सकती है, और technology can save us from the dooming crisis or the looming crisis of climate change, और technology can also make us immortal. वो हमें अमर भी कर सकती है, हमें हमारे को मौत से भी आगे लेकर जा सकती है. So in that context, biotechnology and bioengineering का रोल, पिछली बार हमने artificial intelligence पढ़ा था. Right now, we'll be delving into three things: biotechnology, bioengineering, which includes stem cell research, cloning, and genetic screening, and all that stuff, and reproductive technologies. So, अभी bio के level पे हमें बात करनी है. So, biotechnology में जो advancement हो रहा है, fundamentally अगर हम देखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बताया ना कि आर्टिफिशियल ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, वो बेसिकली क्या था, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी. जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब आपने जो क्रॉप है उसके जीन्स पे, जीन्स क्या होती है, जीन्स क्या होती है? इफ आई एम अज्यूमिंग दैट यू पीपल आर फेमिलियर विद दीस टर्म्स, एंड इफ यू आर नॉट, प्लीज स्टॉप और इंटरवीन. We are familiar, sir. Is everyone familiar with these terms? Cloning. I'll explain what these are. But what I'm trying to argue here is that green revolution was also a kind of a biotechnological intervention or genetic engineering intervention, which happened at the level of the transformation that was brought in the crops, the genetic structure of the crop, so that the production capacity could be increased. And it was increased. That's why there is no the amount of hunger that was there, the famines that used to be there in pre-green revolution era, is hardly seen in these times. So this was the ultimate positive aspect of it. But there were also negative aspects to it. Like, for instance, the amount of pesticides, the amount of chemical fertilizers that were used, the technological changes in fertilizer technology, in pesticides building up, in insecticide building up, and the mutation, the genetic component, the mutation that was artificially produced in the crops, had negative consequences on human health. For instance, there are so many studies right now that are trying to signify the role of pesticides in the development of juvenile diabetes, diabetes type 1, as well as in diabetes type 2. I mean, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग, ये तो बहुत आर्ग्यूमेंट कॉमन है कि कितना खाने में
every crop or every other cereal or crop that we eat is filled with the pesticide that we don't need, that our body doesn't need. And there is possibly no proper mechanism to get rid of that pesticides. And now there are research showing that those pesticides are linked or correlated at least with the grave diseases like diabetes as well as cancer and so many cognitive impairment in young children and all. So this was the negative consequences that people were hardly aware of then the technology came up, when green revolution technology came up. In the same manner, what we are doing right now in terms of genetic engineering and genetic screening and especially stem cell research. Does anybody know anything about stem cell research here? Yes, sir. किसी को क्या stem cell research क्या होता है? सर स्टेम सेल का मतलब एक ऐसी बेसिक सेल होती है जिससे कि हम्म, कोई भी अदर बॉडी पार्ट्स को बनाया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है। एक नॉर्मल exactly. होती है सेल हमारे बॉडी में, जैसे कि स्किन सेल हो गई, उससे सिर्फ स्किन सेल बनाई जा हम्म, सकती है, उससे लिवर सेल या ब्रेन सेल नहीं बनाई जा सकती। बट जैसे एक हम्म, एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो से बाकी और सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक स्टेम सेल है, उससे हम्म, बाकी कोई भी ऑर्गन बनाया जा सकता है, और इस तरीके से बनाया जा सकता है ताकि वो बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर पाए, फॉर एग्जाम्पल लीवर को। तो हम्म, इस चीज के अंदर रिसर्च करने को स्टेम सेल रिसर्च बोला जाता है। नहीं, एब्सोल्युटली राइट कि स्टेम सेल, बेसिक स्टेम सेल का मतलब होता है कि सबसे बेसिक सेल और वो वाले सेल्स जो कि हर एक सेल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेम सेल माने जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मतलब जब एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब जब एग फर्टिलाइज हो गया है और वो अपना फीटस का शेप ले रहा है, मतलब यूट्रस के अंदर वो एक बच्चे का शेप ले रहा है, तो उस शेप लेते वक्त जो बेसिक सेल्स जब उसके हाथ, बिल्कुल बेसिक सेल्स जिसे कहते हैं जो सारे बॉडी के सेल्स बनाते हैं, तो उसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं। और आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी जो हैं और इस सब पे बात हो रही है कि स्टेम सेल को प्रिजर्व कराना चाहिए और स्टेम सेल को हमें बैंक जो होता है स्टेम सेल के, स्पेसिफिकली बैंक है जिसमें वो प्रिजर्व हो जाते हैं, हमें रखने चाहिए। बिकॉज अगर हमारे पास हमारे स्टेम सेल्स होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल खास करके जो बच्चे के उस वक्त पैदा हुए होने के वक्त पर मिल सकते हैं, अगर उस वक्त के स्टेम सेल हमारे पास हैं तो आने वाली फ्यूचर डिसीज जो किसी चाइल्ड को हो सकती है उस पे इलाज हम करा सकते हैं। जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है और किडनी डोनर जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारे बॉडी का है वो उसके डोनर की किडनी को रिजेक्ट कर रहा है, तो आने वाले पॉइंट में हम स्टेम सेल से ये भी कर सकते हैं कि अपनी किडनी जो है अपने बॉडी अपने सेल से बना सकते हैं, तो उसको रिजेक्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी हमारे इम्यून सिस्टम में। सो उस तरीके से स्टेम सेल रिसर्च जो है वो आने वाले टाइम में और अभी भी इनफैक्ट जो हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए मददगार साबित हो सकती है। एंड इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट फ्यूचर, in the treatment of leukemia, which is a form of blood cancer, stem cell gathered from bone marrow has been used since 1960s and 1950s. For instance, बहुत सारा आपने केसेस सुना होगा ना कि अनफॉर्चुनेटली किसी को ल्यूकेमिया हो गया और उसके भाई ने या उसकी मदर ने उसको, खास करके भाई ने, आइडेंटिकल ट्विन अगर है या इवन फ्रैक्टनल ट्विन्स हैं, मतलब दोनों अलग अलग शक्ल के ट्विन्स हैं या एक शक्ल के ट्विन्स हैं, तो उन ट्विन्स ने एक भाई को स्टेम सेल प्रोवाइड करा बोन मैरो सेल में से, एंड द अदर पर्सन गॉट सेव बिकॉज दे शेयर जेनेटिक मेकअप, दे शेयर जेनेटिक सिमिलैरिटीज, and there's genetic similarity in their basic biology. So in that sense leukemia was cured. So this was just an example that was started in 1960s. Now the research has gone at a very high level, and now we will be able to come up with you know come up with this problem of overcome this problem of rejection of the organs from different donors, as in the case generally happens with kidney transplant or liver transplant. So this is a perfect example of stem cell research, which is of course a part of biotechnology, and how it can flourish, it can enhance our human abilities. Now the ethical question that comes into this picture comes into play is that, is it ethical? Or stem cells, so certainly people can ask it's ethical, but then other things, for instance cognitive enhancement, or cognitive as in brain enhancement, or performance enhancement in athletes, or for instance genetic
engineering in prevention of diseases like cancer, या nanotechnology. Is it ethical, biologically ethical, socially ethical, morally? Is it moral? So this component, whether biotechnology or bioengineering, they first of all, it is very important to club them in a certain kind of philosophy or in a certain kind of system of thought, and that is what we call transhumanism. Now transhumanism क्या होता है? Humanism तो सबको पता है कि humanism क्या है, कि giving primacy to human over other animals, or trying to argue that बहुत सारे लोग बोलते हैं कि we are not religious but we are we are humanist, we believe in humans, so we believe in human ethics, that humanity carries an ethical code within itself, and then there is no requirement of a transcendental entity called God that will provide us, or religion will not provide us moral foundations or ethical foundations to our living. Rather, humanity itself carries those ethical codes that are developed out of evolutionary advancement of humans, the way humans have evolved. So fundamentally, humanism is premised on a certain kind of a certain kind of primacy given to human over other beings, over non-humans, and a certain advancement of human that came up in enlightenment का जो दौर था, जो 16-17 सेंचुरी में नजर आता है, जो enlightenment की philosophies, जैसे कांट का मैंने बात करा था, या उसके बाद हमें नजर आते हैं वॉल्टायर, एक बड़े फेमस फिलोसोफर हैं, उसके बाद हमें नजर आते हैं डेविड ह्यूम, many of them, John Stuart Mill and all, they were mostly humanist because they did not consider other species to be better or to be morally superior to humans, and they gave primacy to human flourishment and human collective flourishment over other species. This is humanism, which is rooted in a certain kind of modernity, in a certain kind of modern modern enlightenment project. But transhumanism, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो है कि ह्यूमन से बियॉन्ड चले जाना, यानी कि ह्यूमन की जो कैपेसिटी रही है हिस्टोरिकली, जिसमें ह्यूमन की कैपेसिटी के साथ उसकी एबिलिटीज के साथ उसकी सीरियस लिमिटेशंस भी रही है. सबसे बड़ा लिमिटेशन तो क्या है कि वी आर वेरी फ्रेजाइल बीइंग्स ना. aren't we fragile? Aren't we very vulnerable and susceptible to diseases, to social evils, to genetic problems, to climate problems, to natural disasters and all such stuff? But transhumanism का एक idea है कि we can enhance human capacity to that level that we will be able to go beyond the human limitations. We will be able to transgress or transcend human limitations apropos of or in regard of artificial disasters, natural disasters and diseases, as well as the worst crisis, or not the crisis, but the worst fear of humanity, which is the fear of death. So transhumanism में एक idea embedded होता है जिसे हम कहते हैं कि to be immortal, अमर हो जाने का idea, कि we in a not short span of time, but in the long run, humanity will achieve immortality. Humans will not die. Now, how will they not die? Because we will be able to cure deadly diseases like cancer and aging itself. Aging पे अभी बहुत research हो रहा है कि we will be able to cure aging. हम बूढ़े होंगे ही नहीं. We will be able to maintain the kind of performance that we maintain in our young adulthood. We will be having the same kind of body, same kind of hair, same kind of facial structure and everything, and we will not grow old. And by not growing, we will be able to achieve immortality. This all sounds like science fiction, but this is very much there. If you read biotechnologists and genetic engineers like David Sinclair from Harvard and others, they are now making a claim that death should be a choice. Death should not be that can be avoided. That is not unavoidable. There is no inevitability to death. We can avoid death. We can be immortal. So there are two ways to be immortal, और ये सारा transhuman discourse के अंदर आ रहा है. One way is that we can grow such technologies, or we can
bring something like nanotechnology. Nanotechnology मतलब ऐसे ऐसे नैनो रोबोट्स ले आए जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके एक तो ऑपरेशन कर ले। जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, आजकल कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है रोबोट्स के जरिए, डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, तो विद वो अटमोस्ट प्रिसीजन के साथ कैंसर को निकाल देते हैं। तो जो भी ह्यूमन फ्लॉज हैं कैंसर के ऑपरेशन में वो नहीं आता, तो कैंसर का पेशेंट जिंदा रहता है, बच जाता है। ऐसी अभी बात हो रही है कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम ले आ रहे हैं और नैनो रोबोट्स आएंगे जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसर पनप रहा है उसको पनपने से पहले उसको खत्म कर देगा। या फिर हम लोग जेनेटिक म्यूटेशन कर दे अपने साथ या अपने आने वाली स्पीशीज, अपने वाली जनरेशन के साथ, कि उनकी जेनेटिकली हम लोग ऐसी इंजीनियरिंग कर दे बेसिक लेवल पर जाकर कि उनकी एज अपने आप, जो आज एक ह्यूमन एज एवरेज है 70 80 90, वो 400-500 साल हो जाए, या फिर वो ऐसे लेवल पे चले जाए कि हम 400-500 साल के बाद और फिर ऐसी जेनेटिक कोडिंग कर दें कि आगे भी हम पहुंच जाए। तो वी विल हैव अ चॉइस टू डाई, दैट विल नॉट बी समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल। सो एक ये कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है माइंड अपलोडिंग का, और ये सारा ट्रांसह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स के अंदर आता है, और उसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है रे क्यूर्जवेल, RAYKURZWEIL, रे क्यूर्जवेल, हु इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड एन एंटरप्रेन्योर। तो दूसरा कंपोनेंट जो है इमोर्टैलिटी अचीव करने का, वो है माइंड अपलोड कर देने का। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस करा था ना, कॉन्शियसनेस क्या होती है, फ्री विल क्या होती है, थोड़ा ब्रेन का हमने डिस्कस करा था। उसी अजम्पशन पे ये आइडिया बेस्ड है कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो माइंड है वो एक ही चीज है, और मरने के बाद we will be able to upload our brain or our mind to a computer, जिसमें हमारी सारी मेमोरीज इंटैक्ट होंगी, बिकॉज वी विल बी एबल टू अपलोड, एज इन वी विल बी एबल टू अपलोड द न्यूरोनल कनेक्शंस जो हमारे ब्रेन के हैं, उनको हम लोग कंप्यूट कर लेंगे कंप्यूटेशनल लॉजिक के जरिए, कंप्यूटेशनैलिटी के जरिए हम लोग उसकी एक सॉफ्टवेयर बना लेंगे, उसी तरीके का जैसे हमारा ब्रेन भी एक सॉफ्टवेयर की तरह है, माइंड एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन एक हार्डवेयर है। तो माइंड जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी कंप्यूटेशनल सारा मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो भी कंप्यूटर की तरह काम करता है। बेसिकली हमारा ब्रेन भी एक कंप्यूटर है, बस वो बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, और जो हमें कंप्यूटर नजर आते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर है। तो जो बायोलॉजिकल कंप्यूटर है हम उसको कॉपी कर लेंगे, उसका प्रोग्रामिंग सारी सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर पे, और उस कंप्यूटर को हम सिलिकॉन बॉडी में डाल देंगे। तो हमारी जो हमारा सेल्फ है, जो हमारी सो कॉल्ड आत्मा है, वो मरेगी नहीं, अमर रहेगी। उस कंप्यूटर में हम जिंदा रहेंगे, वर्चुअल रियलिटी में हम जिंदा रहेंगे, या सिलिकॉन बॉडी में हम जिंदा रहेंगे। तो हमारी मेमोरीज हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा जो परसेप्शन ऑफ सेल्फ है, वो भी जिंदा रहेगा। तो इसे कहते हैं माइंड अपलोडिंग, विच विल अगेन बी a threat to mortal human beings. So it will be a step forward in this process. Forget about step forward. It will achieve or attain immortality. We will attain immortality through mind uploading or through genetic engineering, that we will be able to prevent Alzheimer's disease, जो dementia होता है बुजुर्गों में, जिसमें memory loss हो जाता है, brain cells मरते हैं, तो वो भी हम prevent कर देंगे genetic engineering के जरिए, biotechnology के जरिए। और हम deadly disease जैसे कैंसर है, क्योंकि मरता क्यों है इंसान, 3 बेसिक डिसीज से मरता है ना बुढ़ापे में, या तो हार्ट प्रॉब्लम से मरता है, या किडनी प्रॉब्लम से मरता है, या कैंसर से मरता है, या अल्जाइमर से मरता है। इन 4 मेजर प्रॉब्लम से मरता है। छोटी और बीमारियां भी होती हैं, लेकिन मेजरली ये होता है, निमोनिया होता है, दिस लीड्स टू डेथ। These majorly 4 problems. But if we will be able to cure these four problems, then we will be able to attain immortality at least to a level. So now this is the domain of transhumanism, कि हम अपनी ह्यूमन कैपेसिटी को इस लेवल पर ले जाएं कि हम ह्यूमैनिटी की लिमिटेशंस को ओवरकम करता है through the help of technology, especially biotechnology and computer science. Now, if this is possible, the question that comes up is that is it ethical? Are we not playing with God? जिसे बोला जाता है, are we not becoming God? Are we not becoming divine? And do we have the right and moral obligation to be like such? Now, this is the fundamental ethical dilemma that humanity is facing or will face. Yahan tak I can understand there might be some difficulty, but if it is, then please tell me. या कुछ भी समझ नहीं आया? आया सर, आया। और कोई कुछ नहीं बोल रहा? समीर? Sir, I have been following, no doubts as such.
Okay. And what about others? Nobody else is raising any question? या तो उनको Excuse me, सब sir. समझ आ गया या उनको कुछ भी समझ नहीं आया? Excuse me, sir. Yes, please. एक्चुअली सर आप एक्सप्लेन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ रीडिंग के अंदर ना डिसीज के नाम दे रखे हैं और उनको बायोटेक्नोलॉजी से एक्सप्लेन कर रखा है रिलेट करके। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक क्लोनिंग करके है जिसके अंदर हाँ हाँ मैं बताऊंगा, क्लोनिंग पे आऊंगा, क्लोनिंग पे भी आऊंगा। हाँ तो सर आई हम्बल रिक्वेस्ट आप थोड़ा सा एग्जांपल वो दीजिए जो इसके अंदर रीडिंग्स के अंदर ना डिसीज के हैं, क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना सर वो हम एग्जैक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे नहीं, चीजों को। डिसीज का भी एग्जांपल मैं दे रहा था, मैं बैकग्राउंड में बता रहा हूँ पहले आपको, उस पे भी मैं आ रहा था, क्लोनिंग पे आता मैं, या जैसे डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज का भी इसमें एग्जांपल दिया है। उसमें एक पेशेंट का एग्जांपल दिया है जिसको पैरालिटिक अटैक होता है, तो कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस पे मैं उस पे आ रहा था, बट मैं बैकग्राउंड पहले आप लोगों के कंटेक्स्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड। जो मैंने अभी बोला ऐसा नहीं है कि वो उस आर्टिकल में नहीं है, और अगर आपको एग्जाम में लिखकर भी आना है तो जो मैंने अभी बोला है, ट्रांस ह्यूमन टर्म भी उसमें है, पोस्ट ह्यूमन टर्म भी है। अगर ये सब आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे तो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग विच इज नॉट देयर इन दिस आर्टिकल। इट्स जस्ट यू आर राइट दैट एक दो डिसीजेस का नाम एंड आई वुड हैव टेकन दैट, जैसे क्लोनिंग को मैं लाऊंगा अभी, या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की जो बात हुई है, या बहुत सारी डिसीजेस है, जुवेनाइल डायबिटीज और भी हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट बैकग्राउंड, सेटिंग ऑफ बैकग्राउंड इज सो इम्पोर्टेंट कि एक पूरा डिस्कोर्स किस तरीके का है। ये ट्रांस ह्यूमन डिस्कोर्स है, ये ह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स नहीं है। तो इतना आपको समझ आया कि ट्रांस ह्यूमन क्या होता है? यस सर, गॉट इट। और किसी को कोई? ईशा, दिव्या, प्रिया, आई कैन सी सम नेम्स। विनय, No, sir, no विनय, issues. No, sir, no issues. I'm following you. ओके। संस्कृति, Yes, sir, got it. ओके। सो कभी सुना था इस तरीके का आइडिया आप लोगों ने? हैव यू एवर had any exposure to such debates? Yes, sir. कहाँ पे सुना विनय आपने? सर ग्रेजुएशन में भी था हमारे पास, और बाकी की प्रिपरेशंस वगैरह में भी आता है ये टॉपिक इसके ऊपर, इसलिए। किस पे आता है? सॉरी, किस में आता है? एक हमारे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट भी था हाँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी एंड लॉ के ऊपर, हाँ, वो भी था। एंड अच्छा, एक वैसे प्रिपरेशंस करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उनमें भी आता है टेक्नोलॉजी के अच्छा, ऊपर, अच्छा। तो बेसिक माइंड आइडिया। अपलोडिंग को, माइंड अपलोडिंग को सुना है आपने? माइंड अपलोडिंग के बारे में? नहीं सर, ये पहली बार सुना था माइंड अपलोडिंग का। चलो, माइंड अपलोडिंग एक नई चीज है, इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। अब इस पे हम जो अगर आर्टिकल को देखें तो उसमें मेजर एक पॉइंट आता है क्लोनिंग का, जैसे आई थिंक संस्कार ने बोला। अब क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग कुछ बेसिक सिंपल चीज है कि आप जो, आपका जो डीएनए है, आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आप उसको एग्जैक्टली किसी को, आप अपना एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करें, क्रिएट करें through these technologies, but that individual that will be produced will be having exactly the same genetic and DNA structure, or the DNA structure or genetic makeup that you have. Or now the question is cloning similar or equivalent to having an identical twin? Identical twin पता है ना, जो सेम डीएनए वाले एक ही जाइगोट, एक ही एक्स से जो पैदा होते हैं। ट्विन्स आर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्विन्स। Does anybody knows what are those two kinds of twins? सर आइडेंटिकल ट्विंस जिसमें फेसेस सिमिलर होता है, और एक हाँ, एक दूसरा होता है जिसमें फेसेस डिफरेंट होता है। exactly. So but जो faces similar होते हैं, आइडेंटिकल में जो आइडेंटिकल में सर जो जायगोट होता है वो इसी चलते टूट जाता है, किसी रीजन से वो टूट जाता है, दो सेल। exactly, very good. So they are identical twins are monozygotic. उनका जो जाइगोट है, जो एग है, वो एक ही है। और फ्रैटर्नल ट्विन्स, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, इनकी शक्लें अलग अलग होती हैं, दे आर डाइजाइगोटिक। सो फ्रैटर्नल ट्विन्स आर बेसिकली सिबलिंग्स, वो भाई होते हैं जो एक ही समय में एक साथ पैदा होते हैं। उनमें जैसे भाइयों में कुछ थोड़ा बहुत जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है, लेकिन ट्विन्स में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो वो आइडेंटिकल, उनका डीएनए सेम नहीं होता, उनका जाइगोट सेम नहीं होता, उनका एग अलग अलग होता है, वो सिर्फ एक वक्त में पैदा हुए होते हैं। So this is the difference. Now cloning, that is another debate, that is cloning
exactly the same is having a clone means exactly having an identical twin, or is it more than that? I believe that it is more than that, because even in identical twins there is definitely a commonality when it comes to genetic makeup, but utna nahi hota jitna ki the amount that we see in cloning. Cloning is exact your copy. और एनिमल क्लोनिंग तो बहुत टाइम से हो रही है. जैसे पहला एनिमल कौन सा क्लोन हुआ था, किसी को आइडिया? A lamb. Exactly, sheep. Sheep was the one that was cloned initially. सबसे early days जब ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी. Explain. So क्लोनिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? क्लोनिंग के एक एथिकल कॉन्सिक्वेंस जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये आता है कि क्लोनिंग में अगेन वी आर टेकिंग द रोल ऑफ गॉड. अगर हम रिलीजियस रीजनिंग के हिसाब से देखें कि हम जो नेचर ने हमें बनाया है हम उसको छीन कर हम लोगों को बना रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग इंडिविजुअल्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये होता है कि जो क्लोन इंडिविजुअल है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो अगर ह्यूमन, अभी तो ह्यूमन क्लोनिंग बैन है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बैन है, हर जगह बैन है फॉर ऑब्वियस रीजंस. वी नो कि अगर क्लोन एनिमल ह्यूमन बन गया इमेजिन, तो उसको हम ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि वो नेचर ने बनाया है. तो हम क्लेम वो यहाँ पे ये डिबेट आ जाएगी कि वो नेचर ने नहीं बनाया है, वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है. अब यहाँ पे डिबेट ये आती है कि नेचर क्या है और नेचर क्या नहीं है, कि व्हाट इज नेचर एंड व्हाट इज नॉट नेचर. नाउ द प्रोपोनेंट्स of cloning and such technologies will always say that this division that we generally assume between this is natural and this is not natural is actually not sustainable, because fundamentally everything is natural. आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो बन रही है हमें नेचर ने बनाया, लेकिन नेचर हम ही तो हैं. नेचुरल जो इवोल्यूशन होता है उसमें नेचर ने स्पीशीज को इवॉल्व करा, और इसमें से गॉड का जो पिक्चर है वो हटा दिया जाए अगर, यू नो दीज थिंग्स आर नॉट कंटिंजेंट ऑन द आइडिया ऑफ गॉड. रिलीजियस रीजनिंग नहीं है ये. गॉड को अगर साइडलाइन कर दिया जाए, गॉड की पिक्चर को, और एक हम एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू से चीजों को देखें, तो उसके हिसाब से जो क्लोनिंग के प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि दिस इज अ वेरी ऑब्सोलीट, वेरी ओल्ड फैशन आर्ग्यूमेंट दैट नेचर ये है, नेचर ये नहीं है. एवरीथिंग इन दैट इन सेंस अमाउंट्स टू नेचर, बिकॉज नेचर भी तो उसी फंडामेंटल कंपोनेंट से इवॉल्व हो रही है. जैसे कार्बन बेस्ड लाइफ है तो अब सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो जाएगी. पहले हम क्लेम करते थे कि इवोल्यूशन ने हमें बनाया, अब इवोल्यूशन ने हमें बनाया तो हमने आगे अपने स्पीशीज बना दिए, तो इवोल्यूशन तो उसमें भी रोल प्ले कर रहा है ना. तो जो नेचुरल आर्ग्यूमेंटेशन है वो जनरली रिलीजियस लोग देते हैं. अब इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये आती है कि वी एज अ सोसाइटी आर ऑल्सो रिलीजियस, aren't we? Majority of the people are religious. Not everybody is an atheist and agnostic. If we are religious, shall we be promoting such things which violates the religious reasoning? And shall we follow the law of God, generally which is comes from religious reasoning, that law of God, or shall we play with God or God's creature? That is the fundamental ethical dilemma that such technology faces. Now, there can be no one answer. This is an ethical dilemma. So nobody is here to interpolate such ideological things कि एक ही तरीके से सोचना चाहिए. Rather, the point here is to understand कि ये टेक्नोलॉजी के political consequences है, ethical consequences है. जैसे क्लोनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोनिंग का तो ये है कि भाई जो क्रिएटेड इंडिविजुअल होगा उसको पता ही नहीं होगा कि उसका एग्जैक्ट पेरेंट क्या है. And second, the major problem with cloning is that if cloning becomes viable in future, it will violate the basic law of sexual reproduction. क्योंकि सबको पता है कि एक चाइल्ड पैदा होता है दो इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सिबल कॉजेस की वजह से. देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पर्म एंड देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एग. बट क्लोनिंग में तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट, सो देयर इज नो लॉजिक ऑफ हैविंग parents and all. So sexual reproduction, which is so embedded in human collective history, will be violated.
तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज्यादा यही है कि इट वायलेट्स द लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ द अदर पॉइंट इज कि अगर हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं, चलो क्लोनिंग की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग. ये तो हमने नेगेटिव बात करी. जेनेटिक स्क्रीनिंग में क्या है? जेनेटिक स्क्रीनिंग में वी विल बी एबल टू स्क्रीन individuals for the future deadly diseases that they can suffer from. For instance, breast cancer जो women में होता है, there is a gene responsible for it, namely the gene called BRCA1 gene. Now, this BRCA1 gene can be screened at a very early stage, especially जिसमें young adolescent girls की उस time पे it can be screened, and one can certainly know that if somebody is whether somebody is carrying that gene or not. If somebody is carrying that gene, then somebody can undergo operation and can remove the whole breast and will be able to prevent breast cancer. For instance, एक बहुत famous American actress है ना, I think Angelina Jolie or someone. She was not diagnosed with breast cancer, but she got to know that she is carrying that BRCA1 gene, which is responsible for breast cancer, and she has high chances of suffering from breast cancer in 10 years. But the genetic screening test that she underwent did tell her that she will suffer from cancer, and she removed her breast, and she overcame that problem. She did not suffer from cancer. So there are obviously pros, but there are obviously cons also. There are obviously negative components to it. So ultimately, the question that becomes important is that is technology or biotechnology per se, is it a bane or is it a boon? Is it good for humanity, or are we trying to play with something called the Frankenstein monster? जो Mary Shelley was a literature person, and she's a novelist basically, early modern novelist who conceived this idea of Frankenstein monster. मतलब कोई ऐसा monster technology में हम बना देंगे जो हमें ही खा जाएगा. हमने उसको बनाया and then वो हमें खा जाएगा. So is biotechnology or other technologies, are they like that, or are they going to be like that, or they are going to save humanity from deadly diseases, and they are going to or is that technology going to take us towards the path of immortality? And if that is going to happen, then is it ethical? Is immortality ethical or not? Is prevention, forget about prevention and cure or of these diseases that generally happens in aged population, is it ethical? Taking the amount of population explosion that is happening right now in the world. There are 800 crore population that is there of the earth right now. And India is obviously, we know, the largest, India has the largest population of the world. So taking that into consideration, that we are already facing population explosion, is the intervention by biotechnology to live us longer, to help us live us longer, or to help prevent diseases so that we can live longer and we can have healthy longer life? Is it ethical? Forget about immortality. Majority of the people will say immortality is unethical, or because we cannot afford to live. We should not be living till eternity. Although it's based on flawed reasoning, I don't think immortality is possible. Going by the laws of physics, there is law of thermodynamics which violates. But whatever the enthusiasm that is there on the part of biologists and computer scientists that we will be immortal, is the very idea itself ethical? That is the main question. So do you guys have any response to this? Like, क्या सोचते हो आप लोग? Is it ethical immortality का, या फिर हम disease को prevent करना, या लंबी जिंदगी जीना through the intervention of genetic screening, genetic engineering, and biotechnology and all that stuff? Is it ethical or not? या विनय? सर, इन माय ओपिनियन, अगर हम इस चीज को एक एथिकल उस पे लेके जाते हैं ट्रिप पे, कि हम जेनेटिकली किसी को मॉडिफाई करना या फिर इन चीजों से डिजीजेस को कम करना या उनको क्योर करना, अगर उस चीज को एथिकली सेंसर करते हैं, तो उसी तरीके से तो फिर मेडिसिन को भी सेंसर करना पड़ेगा. जितने भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, खांसी जुकाम बुखार का करवा लिया, या फिर कोई भी बड़ी बीमारियों का करवा लिया. अभी कोविड था, तो कोविड में हमने जो दवाई बनवाई, उनको भी हमने सेंसर करना पड़ेगा, वो भी कैंसिल करनी पड़ेंगी. अगर नेचुरली ही रहना इस रीजनिंग से कि चेंज ही नहीं होना चाहिए,
तो फिर वो चीज को भी रिपीट करना पड़ेगा। तो नहीं, बहुत लेकिन अच्छा कि पॉइंट है, ये चीज तो एक ज्यादा सही नहीं बनी। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर जस्ट टू प्ले द रोल ऑफ, आई एग्री विद यू, बट जस्ट टू प्ले द रोल ऑफ डेविल्स एडवोकेट हियर, अगर डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करूं मैं और मैं बोलूं कि बट यू नो देयर इज अ डिफरेंस, हाउ कम देयर इज अ डिफरेंस? difference is that these technologies, ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में क्या थी पार्टीशन के वक्त, इंडिपेंडेंस के वक्त? किसी को कुछ आइडिया है? कोई वेग आइडिया? लाइफ 45 एक्सपेक्टेंसी? नो, इवन लेस देन 45 आई सपोज, 30s में थी। what is it right now? around 70 से 60 70 Yeah, around 71, ठीक है। तो we, our life expectancy in 75 years, 77 years has doubled and population explosion has happened. नाउ अर्थ इटसेल्फ, जो विनय का क्वेश्चन है, अगर मैं उसको काउंटर करूं विनय का पॉइंट को, अभी हमारे अर्थ में क्लाइमेट चेंज है, सबको पता है। देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज लैक ऑफ फूड, दैट unless we bring extensive technological transformation, there is a possibility that we might face war on food or war on water, and we just have one earth. मार्स को अभी बात चल रही है कि मार्स को कॉलोनाइज कर लेंगे और ये सब कर लेंगे, बट दीज आर ऑल speculations. There is nothing concrete, and it is almost, it's not that easy. Colonization of Mars is not that easy, so that humans can live on Mars. So we have one Earth till for the time being. Now population explosion इतना हो गया है और biodiversity loss, tremendous amount of biodiversity loss has happened. हम अपने लिए ही फिक्र करते हैं ना, एथिकल पे जब हम बात आते हैं तो ट्रांसह्यूमनिस्ट का प्रॉब्लम क्या आता है कि they tend to ignore other species, especially animals, plants, trees, ecosystem, biological ecosystem, बायोडाइवर्सिटी। जितना 100 साल और 200 साल में बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, उतना पूरा अर्थ की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इंसान बहुत लंबा जी रहा है। इंसान जब लंबा जी रहा है तो वो दूसरे स्पीशीज के लेवल पे जी रहा है ना, दूसरी स्पीशीज को ओवरकम करके जी रहा है, क्योंकि उसको रिसोर्स चाहिए, उसको घर चाहिए, तो उसको जमीन चाहिए, या एटलीस्ट उसको कुछ तो चाहिए ना, पानी चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट। मतलब इज सस्टेनेबिलिटी रियली सस्टेनेबल, एंड कैन वी बी सस्टेनेबल विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज? So transhumanism doesn't give a damn or doesn't give any importance to non-human animals, and especially ecosystem, biological ecosystem. And they believe that humanity will overcome all such limitations, but what about other species? And if we will be able to live, now we are living 70, 80, 90. If we can live for 200 years, so population will be a huge problem na, in that sense. Although one can give an argument that there will be less of procreation, but still, what will happen to other species? This is an ethical dilemma. I'm not disagreeing with what Vinay said. I endorse his point. But then this is an ethical dilemma. And that is what we are trying to study here. Are you getting the point? यस सर। किसी और का कोई पॉइंट? अभी जितना हमने डिस्कस करा, ट्रांसह्यूमनिज्म क्लियर हुआ ना पृथ्वी? Yes. Yes, Do you sir. have a point? So Do you it have a would point? be, Hmm. yes, sir. It would be unethical because human will behave like animals. उन्हें ह्यूमन से मरने का डर ही खत्म हो जाएगा, तो वो और Yes, एनिमल की तरह भी करने लगेंगे। exactly. मतलब good point. कि imagine a scenario or a situation where there is no death. मतलब I don't know whether it is possible. I think it is not possible. But imagine a scenario where there is no death. So in that sense, life gets meaning. Many philosophers tends to argue. I don't fully agree with this, but life we tend to get our meaning because we're constrained by this thing called finitude. You know, we are finite beings. We are not infinite beings. We are constrained by limited by a certain lifespan.
Imagine that lifespan. Imagine we have no constraint at all. So it will be huge. It will have huge consequences. I'm not saying that we should always be cynical, but this is not an easy debate. And first of all, this debate might also be futile to an extent that we cannot control it. The technological singularity की मैंने बात बोली कि there is a possibility that technological singularity will be achieved and human will not be able to control technology. ये भी एक बात है. I think some people want to join. So ये इसमें यहाँ पे बात आती है. दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि अगर हम उसकी बात करें, ये तो क्लोनिंग हो गया, स्टेम सेल रिसर्च हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई. अगर हम जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर आप पहला आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि एक लड़की होती है, उसको पैरालिसिस अटैक होता है, पैरालिसिस हो जाता है और किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, एंड शी सफर्ड a loss of hand, from a loss of hand, and through the intervention of technology. Vinay, you want to come in? Oh, no, sir, I'm just saying yes. हाँ, so उसके केस में technologies जो bio doctors हैं, what they actually, and this is very common these days, you must have seen people with artificial limb. So what is artificial limb? Is basically brain computer interface ना, कि आपने इलेक्ट्रोड, EEG का पता है किसी को, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, कि इलेक्ट्रोड जो लगाते हैं ब्रेन पे, कुछ आइडिया? कोई बायो बैकग्राउंड से है, कभी बायो पढ़ी है? मतलब ऑब्वियसली स्कूल में पढ़ी होगी, उसके बाद से कभी किसी ने अच्छा EEG का पता है? जैसे ECG होता है ना, हार्ट का होता है, EEG होता है ब्रेन का, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. या सो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और वो ब्रेन की जो वेव्स है उसको मॉनिटर करता है ऑन अ कंप्यूटर. सेम तरीके से जो आर्टिफिशियल लिम्ब है वो क्या करता है कि वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस करता है. तो एक तरीके का आपका जो ब्रेन है और आपके जो थॉट्स ब्रेन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपका अगर मन कर रहा है हाथ उठाने का, तो आपका वो कंप्यूटर के साथ जो इंटरफेस है वो लग जाएगा और आप अपना आर्टिफिशियल हाथ उठा लोगे अगर आपका हाथ नहीं भी है तो, और आप उससे अपना डेली जॉब्स कर पाओगे, डेली अफेयर्स कर पाओगे. दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वी having a combination of natural and technology, we being a combination of nature and technology. And this is what a philosopher named a philosopher called cyborg. What is it called? Cyborg, Cyborg. And the philosopher name is I'm forgetting the name. So cyborg is the thing. Donna Haraway is the philosopher. DONNA, और ये लिख के आ सकते हो. You can certainly write this name, Donna Haraway. She's a very prominent. You can note this down. You can note it down. You note it down. The Donna Haraway, DONNAHARAWAY, Donna Haraway, and she came up in 1980s with a manifesto called Cyborg Manifesto. CYBORG. Cyborg. Cyborg क्या है? Cyborg का मतलब कि it's a combination of natural, human and technological and computer. तो अब उसका पॉइंट ये है कि we are all cyborgs. हम कोई नेचुरल ह्यूमन है ही नहीं. जैसे कि एक एग्जांपल दूं, पेसमेकर का पता होगा आप लोगों को, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है ओल्ड एज में या इवन यंग एज में भी, तो एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया जाता है, इसे पेसमेकर कहते हैं, जो उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है हार्ट की. पेसमेकर का नाम सुना है ना? Pacemaker. Any response? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So pacemaker is a perfect example that so many of us, so many individual human beings are now living with a technological gadget, a technological instrument or a medical instrument within our bodies. So this is what Donna Haraway calls that we are all cyborgs. We are all combination of nature and technology. There is nothing called pristine nature or essentialized natural being. We are all a combination of technology and nature.
there's nothing, no one can transcend that. So this is it. तो ये एक आर्ग्यूमेंट आया है कि हम सब बायोटेक्नोलॉजी पे इतने डिपेंडेंट हैं कि वी कैन नॉट ओवरकम इट, एंड नाउ द फ्यूचर और द प्रेजेंट इटसेल्फ इज बायोटेक्नोलॉजिकल. सो हाउ शैल वी सी दैट? दिस इज एन एथिकल डिलेमा. तो इस वाले जो आर्टिकल में हमने पहले बात करी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायो इंजीनियरिंग क्या है, डिसीजेस को ओवरकम कैसे कर पाएंगे, उसके एथिकल डिलेमा क्या होंगे, स्टेम सेल रिसर्च क्या हो रही है, और कॉग्निटिव और एथलेटिक इम्पेयरमेंट और एनहांसमेंट में इसका काम हो रहा है. ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, वो कितने ज्यादा एथिकल है उनको लेना कि हम अपनी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कर दें. मतलब इमेजिन कि आपको ये बोला जाए कि there will be a future or there in present times also there will be drugs, जैसे अब मूड एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं. एंटी डिप्रेसेंट बहुत लोगों ने लिए होंगे, वो मूड एनहांस कर देते हैं. Now this is also part of nothing but not technology but influential biology or medicine, biomedicine having a huge role on our nature. So very idea that the earlier it was assumed that this person is nice because this person has a jolly nature, this person is kind. But what if medicine is making you happy and medicine is making you much more gregarious, sociable. एंड फॉर इंस्टेंस ये सब आपको पता ही होगा कि अगर किसी का विटामिन डी बहुत कम है तो उसको डिप्रेशन का खतरा बहुत ज्यादा होता है. इसलिए आई ऑलवेज गिव एडवाइस टू my friends and students and all कि always be very careful of vitamin D. Always take sun or at least take supplements if one is not able to take sun, or at least vitamin D rich foods which are not there actually. That's why supplements become extremely important, because अगर vitamin D की कमी है तो you tend to get your possibility of getting depression is huge, is very high. But if you take supplements which are artificially produced, then you will be able to overcome that. So again, a perfect example of how medicine, biomedicine is playing with our biology or our psychology also, mood expressions and all that stuff. So we are definitely not an individual, natural individual. We are all combination of nature and technology right now. So this is the crux of this article and the ethical components, ethical issues. So it concludes with no as such hardcore answers to the problems. Rather it rather exposes students, or it gives an exposure to students about the fundamental debates that are going on and the ethical moral dilemmas concurrent to those debates in biomedicine, biotechnology, genetic engineering, genetic screening, cloning and all that stuff, stem cell research. तो ये आर्टिकल समझ आया? नहीं समझ आया, I suppose. Yes, Nobody else responds. हाँ बोलो. सर इसमें क्या बोलते हैं, डॉली नाम की जो शीप थी उसको प्रॉब्लम, मतलब उसको क्लोनिंग की से उसको वो किए, लेकिन फिर उसके बाद उसकी 2-3 महीने के बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है इसमें. तो ये क्लोनिंग के बाद भी 100% श्योरिटी नहीं है कि वो बंदा जिएगा ही. एग्जैक्टली. ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना कि जो क्लोन इंडिविजुअल है, एनिमल है या ह्यूमन इंडिविजुअल है, वो कितना सस्टेनेबल होता है. तो ये सारी टेक्नोलॉजी, मतलब डॉली जो शीप थी वो तो काफी साल पहले, आई थिंक 20-25 साल हो गए उस बात को, आई एम नॉट श्योर कितना साल हो गया, बट काफी साल हो गए. बट जो आज टेक्नोलॉजी है उसके बावजूद डिस्पाइट दैट nobody is sure that what are the consequences. So it's like going into this dark blind alley, एक ऐसी अंधेरी गली में जाना है जिसमें you never know what the future is. So that is where the ethical moral dilemma and political questions comes into play ना, that is technology. So ये crux ही है ये इस टॉपिक का पूरे का, कि क्या टेक्नोलॉजी को हमें टेक्नोलॉजी पे छोड़ देना चाहिए या ह्यूमन को इंटरवीन करना चाहिए. क्या टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स के परे है, क्या टेक्नोलॉजी क्लास डायनेमिक्स के परे है, कि क्या बड़ी फोर्सेस जो है, जो टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट हैं जनरली, वो कौन है? एलन मस्क, और जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या भी नहीं. सर इसमें ये भी एक आ सकता है पॉइंट के एथिको लीगल रीजंस आ सकते हैं इसके अंदर. फॉर एग्जांपल अगर क्लोनिंग करते हैं, सेम पर्सन का डीएनए अलग अलग लोगों के पास होगा,
तो उस केस में लोगों को आइडेंटिफाई करना कि किसने एग्जैक्टली क्राइम किया और कौन इनोसेंट है, वो डिफाइन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एंड इसी एब्सोल्युटली रीजन से जुड़ा हुआ है कि प्रिवेसी का रीजन है कि वैसे बायोमेट्रिक सबका अलग अलग होता है, डीएनए सबका अलग है, सबका बायोमेट्रिक अलग होता है। तो उस बायोमेट्रिक के अगर अलग अलग क्लोन्स होंगे तो उनकी प्रिवेसी का भी इशू हो सकता है इस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ही। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू फॉर दिस। कि लीगल कंपोनेंट जो उसका है, लीगल कंपोनेंट एक पॉलिटिकल कंपोनेंट का एक लार्जर पार्ट ही होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स और लीगल फ्रेमवर्क्स आसपास से चलते हैं। लीगल फ्रेमवर्क्स आर आल्सो नॉट एपॉलिटिकल, दे कम्स थ्रू अ पॉलिटिकल प्रोसेस ओनली ना, ये सब हमको पता है। सो एब्सोल्युटली राइट, राइट टू प्राइवेसी। उसके अलावा अगर हम उसको देखें कि डाइवर्सिटी इस, सॉरी, डाइवर्सिटी जी की सर। एक डाइवर्स पॉपुलेशन जो है, अलग अलग रेसेस होती हैं, अगर क्लोनिंग करेंगे तो जो सुप्रीम रेसेस जो मानते हैं अपने आप को, जैसे कि अमेरिका एग्जैक्टली, साइड इसको, में मानते ये हैं तो कि हम है, सुप्रीम रेस, इसको वो इसको बाकी कहते हैं, को कम कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसको यूजेनिक्स कहते हैं ना। और यूजेनिक्स अच्छी बात लाया आप, यूजेनिक्स आज से नहीं है। हिटलर का क्या प्रोजेक्ट था? हिटलर का प्रोजेक्ट यूजेनिक्स का ही तो था, कि हम ऐसी स्पीशीज इंडिविजुअल को पैदा करेंगे जो डिजाइनर बेबीज, डिजाइनर बेबीज का आइडिया बड़ा कॉमन है कि डिजाइनर बेबीज एज इन, जैसे हमें पता लग गया कि, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि if somebody is thinking of conceiving, if a couple is thinking of conceiving, and then they got to know that there is a huge risk involved, and the children or the child will suffer from genetic diseases, तो हम उसको ओवरकम करें, ये तो चलो एथिकल माना जाएगा। लेकिन क्या ये एथिकल माना जाएगा कि आप एक तरीके की शक्ल को प्रमोट करें, जो आप बोल रहे हो ना, या एक तरीके के रंग को प्रमोट करें, कि गोरा होगा तो उसको हम प्रमोट करें, या रेस को प्रमोट करें, या लंबा बच्चे को प्रमोट करें, उसके जेनेटिक उसको देखने का। सो दीज आर ऑल सोशली ड्रिवन एथिकल क्वेश्चंस, बिकॉज हमारे समाज में, विच इज डेफिनेटली अ colonialized, we have a colonial psyche ना, कि why do we prefer fairer people over darker people? Because we were colonized by fair skinned people. Now we have the same mentality कि we want our child to be fair, we want especially girl child to be fair and all that stuff. Why do we want that? Because this is part of our colonial psyche कि हम लोगों को अंग्रेजों ने राज किया। I always wonder if Africans had ruled us, black people had ruled us, what would have been our obsession? Is our obsession would have been the same? Does we would have been obsessed with dark color then, because the rulers were dark. So you always consider this कि whenever we are obsessed with white color, this obsession, is it natural or is it our part of our colonial history? I feel that partly it is part of our colonial history. What do you guys think? No सर response. इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली बिकॉज उसमें एक तरीके से मेंटेलिटी को प्रमोट किया गया था कि ये जो रेस है ये सुप्रीम रेस है, तो वो एक मेंटेलिटी सबको एक Exactly. कंटिन्यू करती गई है। एग्जैक्टली। तो ये जो कहना कि गोरा रंग जो होता है वो आकर्षित करता है, I don't think this is true. I don't know, but I don't think this is true. This is part of our colonialized psychology that we always carry. Does somebody beg to differ from what I've said? किसी को ऐसा लगता है कि I'm wrong, like being fair and white, there's some internal innate What? disposition towards being fair. Yeah, somebody wanted to intervene. कौन था वो अभी जो आया था जो? समीर, was it you? No, sir. So what do you think, Sameer? Regarding this, This question that our being society's fair? obsession. Yeah. No, sir. Like nothing is internal about it. It is all about how society sees us. Because Yes. uh, अच्छा, ये तो चलो मैं मानता हूँ, आई फुली एग्री जो आप लोग, इवन लाइक आई हैव सेड दिस, तो लेकिन व्हाट अबाउट सिमेट्री? डू यू थिंक सिमेट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज वर्थ रेजिंग। फॉर इंस्टेंस, आज जो जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी पे काम हो रहा है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये है कि एवोल्यूशनरीली, और ये सोशल साइंस के स्टूडेंट नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि बिकॉज वी डोंट टेंड टू स्टडी
human biology and human evolution thoroughly. And I think this is very important कि social science वाले एटलीस्ट साइंसेस को थोड़ा समझे कि साइंस में क्या एडवांसमेंट हो रहा है, उसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी समझे, बट जनरली साइंस में क्या हो रहा है इसको पता होना चाहिए, अदरवाइज एक ही सब्जेक्ट से कभी कुछ नहीं होने वाला. इंटरडिसिप्लिनैरिटी इज द की एंड दैट इज व्हाट द फ्यूचर इज. सो अगर हम ऐसे देखें कि बहुत सारे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि एवोल्यूशनरीली हम लोग जो है सिमेट्रिकल फेसेस की तरफ आकर्षित होते हैं, बिकॉज सिमेट्रिकल फेसेस जो होते हैं, रंग की बात नहीं हो रही है, रंग तो डेफिनेटली कॉलोनाइज्ड एक उसका कंपोनेंट है कि कॉलोनाइज साइकोलॉजी को वो मैनिफेस्ट करता है, लेकिन सिमेट्रिकल फेसेस को आप कैसे देखते हैं या हाइट को कैसे देखते हैं? जैसे बहुत सारे एक आर्ग्यूमेंट हैं कि दिस women's preference for taller males are not just a social product or not just a social construct, rather it's part of our evolutionarily embedded psychology that women tends to look for at least taller males जो उनसे tall हो, because evolutionarily देखिए अगर हम evolutionary past में जाएं तो डिवीजन ऑफ लेबर तो हुआ एक पॉइंट पे, तो मर्द जो लंबा होता था वो जनरली ऐसा माना जा रहा है कि वो ज्यादा उसके बेनिफिट्स होते थे, कि बेनिफिट्स ये होते थे कि वो जो प्रीडेटरी स्पीशीज हैं उनको देख पाएगा, एंड मेजरली देयर वर बेनिफिट्स टू इट, muscle benefits and other kinds of benefits in his capacity to fight with other animals. And we are primarily animals, we are rooted in our genetic evolutionary history. But feminists, especially social constructivists, would disagree with that, and they would say no, even our preference for taller males, women's preference for taller males is also a social construct. So what do you guys think, especially girl students? Any response? Sir, I agree with your point. What? I did not give my point. I just laid out the different perspective. Point, like you have just presented that thought now about that evolutionary process and all that, like as a female or a girl. So there is. Okay, so you're saying there is serious limitation on the part of feminists, so many kinds of feminists who always say that everything is a social construct, everything is patriarchy. So if a girl is falling for a taller guy, she is rooted in patriarchal notions. So you're saying that's not absolutely, sometimes it's true, no doubt. So many of, for instance, color ka preference is colonized, part of our colonial history. और इवन टू एन एक्सटेंट आई डोंट नो हाइट का भी हो सकता है, बिकॉज अंग्रेज लंबे भी होते हैं हम लोगों से, उनका जेनेटिक मेकअप उनको लंबा करता है, यूरोपियंस लंबे होते हैं हमसे, लेकिन हिंदुस्तानियों में या ग्लोबली इज दिस प्रेफरेंस दैट विमेन हैव फॉर टॉलर मेल्स, is it completely social or there is a component of our evolutionary past? That's the question. So Amrita believes that, if I'm not wrong, Amrita, you're saying that there is a component of evolutionary history to it. So, according to me, I might be wrong, but like society, what you are talking about, social construct. So society never construct very opposite things to the man. Like man can be acceptable in all the condition, whether he is tall or short. Am I making sense? No, I'm social construct मतलब मेरा कहने का मतलब है, no, I think social construct आप गलत समझ लो. मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी प्रेफरेंस होती है, जैसे किसी लड़की की प्रेफरेंस है, फॉर इंस्टेंस जैसे हम बात करें कि लंबे लड़के की, इज इट नॉट सोशल कंस्ट्रक्ट इन द सेंस दैट हर फैमिली एंड हर सोसाइटी has constructed that preference for her, as in मतलब सोसाइटी जैसे इवॉल्व हुआ है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री उसमें है, उसमें सारी फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस, तो उसमें उन्होंने, और अंग्रेज जो थे वो हमसे लंबे थे, उसमें कॉलोनियल पास्ट भी आ जाता है, तो उन्होंने हमारी साइकोलॉजी को ऐसा गढ़ दिया, खास करके लड़कियों की साइकोलॉजी को. लड़कों का अलग डिबेट आता है और उनका प्रेफरेंस जो होता है वो अलग है, बट अभी हम लड़कियों की अगर बात करें कि उनकी साइकोलॉजी को ऐसा बना दिया कि वो लंबे लड़कों को पसंद करने लग गई, तो क्या वो सोशल कंस्ट्रक्ट है या उनकी बायोलॉजी में एवोल्यूशनरी, मतलब समझ रहे हो ना, ये डिबेट है बायोलॉजी और सोशियोलॉजी की. बायोलॉजिकली हम इवॉल्व्ड स्पीशीज हैं, जंगलों में रहते थे, प्राइमेट से निकले हैं, चिंपैंजी हमारे कजन है, और हमारे स्पीशीज सारे वो सब बंदरों से आए हैं एक तरीके के, तो और उससे पहले आगे और स्पीशीज से आए हैं, मछली से आए हैं, इवॉल्व है ना, ये डार्विन यही कह रहा है और ये सच्चाई है. तो जब हम इवॉल्व स्पीशीज हैं, तो जैसे जानवर जो होते हैं जब वो अपने
पोटेंशियल पार्टनर्स को खोजते हैं, तो उसमें वो क्या देखते हैं? औरत देखती है कि क्या वो, क्योंकि एवोल्यूशन का क्या लॉजिक है कि आप प्रोक्रिएशन कर पा रहे हो, रिप्रोडक्शन, अपने स्पीशीज को, अपने जीन्स को डिसेमिनेट कर पाओगे या नहीं। एवोल्यूशन का सिर्फ यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो वो देखेगी, इनेटली देखेगी, इम्प्लिसिटली देखेगी, वो सोचेगी नहीं, लेकिन उसको लगेगा कि यार अगर मस्कुलर आदमी है, या जिसे अल्फा मेल कहते हैं, अल्फा मेल, मैं ये नहीं कह रहा सच है, ये एक थ्योरी है। अल्फा मेल का प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि अल्फा मेल, I don't know how much of women are attracted towards alpha male, but there is a component of them who are attracted towards alpha male. And alpha male के क्या traits हैं कि they can lead, they can provide safety, they can provide security. And ये नहीं कि लड़की वो deliberately सोच रही है कि उसको ऐसा पार्टनर चूज करना है, बट क्योंकि उसकी बायोलॉजी, उसकी जेनेटिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो उसको उसकी तरफ लेकर जा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली इवोल्यूशन हमें क्या बताता है कि हमें जीन्स को डिसेमिनेट करना है, और उसको लगता है अगर सिक्योरिटी होगी तो देयर विल बी सिक्योरिटी फॉर माय चिल्ड्रन आल्सो। ये एक इम्प्लिसिट असम्पशन है, ये इम्प्लिसिट वो है, डायरेक्शन है, ये कोई डेलिब्रेटिव थॉट से नहीं आता है। और जो फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि नहीं नहीं नहीं, ये समाज से आ रहा है, और समाज हिस्टोरिकली कॉलोनाइज रहा, समाज रेसिस्ट रहा, समाज पेट्रियार्कल रहा। दैट्स व्हाई women are also embedded in patriarchy. So they would say that it's patriarchal, which is again a part of the society. Society constructed, or society made them what they are thinking right now. And biologists would say that more than society, it's our biology. So there is a debate between society and biology here. Are you getting the point? Yeah, Vinay. Right. Yes, sir. सर इसमें मैं एक पॉइंट इसमें एक छोटा सा मैंने क्लिप देखा था इसमें कि बायोलॉजी काफी समय बाद अगर हम देखते हैं तो सोशियोलॉजी के साथ मिक्स करने लग जाती है, और जो बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन हम बहुत अच्छा point. बायोलॉजिकली कैरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम आर्यंस की बात करते हैं, आर्यंस जब आए थे उनकी हाइट काफी लंबी थी, वे गोरे चिट्टे थे, ये चीज को भी हम मानते हैं, और उसी चीज के कारण ये बोला जाता है कि भाई जैसे राम जी की चीज को बताया जाता है कि लंबी हाइट, ये लंबे लंबे हाथ वगैरह। तो ये चीजें एक बायोलॉजी के अंदर सोशल जो कंस्ट्रक्ट था वो गढ़ चुका है। बहुत अच्छा पॉइंट। सो आप ये जो बोल रहे हो, और आज के जो अच्छे फिलोसोफर्स हैं जो इस सोशियोलॉजी और बायोलॉजी की बाइनरी को बियॉन्ड जाते हैं, वो कहते हैं कि नेचर एंड कल्चर इंटरट्वाइंड रहते हैं, हमेशा एंटैंगल्ड रहते हैं। तो नेचर मतलब बायोलॉजी, कल्चर मतलब सोशियोलॉजी, और बायोलॉजी से सोशियोलॉजी इन्फ्लुएंस होती है, और सोशियोलॉजी से बायोलॉजी इन्फ्लुएंस होती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू कम टू दैट कंक्लूजन ओनली जो आपने बोल दिया। थैंक यू सो मच। सो ये क्लियर हुआ आई थिंक इसके consequences. Sameer, you're not saying anything right now, मतलब today, I suppose. Sir, I think, sir, I have been in a dilemma. So, for example, one cannot clearly come to a conclusion that it's either evolutionary or social. Like when I said, No. I'm not making this point. No. I am just offering you or giving you exposure to this debate that has happened in social science circles, especially in amongst the circles of feminist groups. For instance, I can tell you one very important debate that happened in early 2000. जैसे अभी आप लोग सब सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको सबको पता है कि जनरली ये फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट होता है, और ये सच्चाई है इसमें एक हद तक कि जो सेक्सुअल वायलेंस होता है समीर, उसका कारण क्या बोलते हैं, या रेप जैसा हीनियस क्राइम हुआ, उसका कारण क्या बोलते हैं? उसका कारण बोलते हैं इट्स अबाउट पावर, it's about men imposing power on opposite gender, opposite sex, and it has less to do with sexual urges of the men and more to do with this tremendous, not tremendous, but more to do with this desire rather to impose power or to express his power over the opposite sex. So ये feminist argument है. Sorry, to show the dominance, exactly, to express power. तो ये feminist argument है, और ये उनका claim, feminist claim ये है हमेशा कि majority cases में, I don't know the data, but this is what I've read, that their argument is that in majority of the cases, especially in 70 to 80%, rape or sexual violence happen within those whom you know, like within known people, sometimes in families or sometimes in extended families or friends and all. So it has more to do with our patriarchal setup, which is about power, which is about dominance. लेकिन इसमें एक लेकिन बहुत बड़ा आता है,
2001 में एक किताब आई थी, इसको आप जो भी फेमिनिस्ट थ्योरी में इंटरेस्टेड है वो एक देखे जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डिबेट में सेक्सुअल वायलेंस की, रैंडी थॉर्नहिल एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रेप, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रेप। और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर रेप एक सिर्फ इंसानों में होती हुई चीज है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेप इंसानों में ही होता है ना, लेकिन रैंडी थॉर्नहिल और बहुत सारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने प्रूव कर दिया कि रेप जैसा फिनोमेना सिर्फ इंसानों में नहीं होता, वो दूसरे किंगडम एनिमल्स में भी होता है। जैसे डक्स का एग्जांपल दिया रैंडी थॉर्नहिल ने कि रेप एंड सेक्सुअल वायलेंस एंड सेक्सुअल कोercion, that is what sexual violence is, violation of consent, that is so common, not so common, but that is actually seen quite a time in so many different species, non-human species, especially in ducks and so many other animals. So this actually produced a kind of a huge debate within social science and natural science concerning the question of sexual violence and rape, and many social constructivist feminists became very aggressively critical of Randy Thornhill and his work, and started saying that this is wrong biology. But this is not wrong biology. वो कोई patriarchal आदमी नहीं था जिसने उसमें, वो तो experiment है, और experiment has shown that this is common. So now the argument is कि इट इज बोथ, जैसे विनय ने बोला कि एक पॉइंट ये भी है कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हम इवॉल्व स्पीशीज, हम नेचर से आ रहे हैं, तो कल्चर इज रूटेड इन नेचर, सोशियोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम नेचुरल सेटअप ओनली। समाज नेचर से तो आया है ना, समाज कोई आसमान से तो नहीं टपका है। You getting the point? So sociology and culture is rooted in our natural setting, and in natural setting, evolution is the key through which humans or other species evolved. And what was the purpose? There was no purpose of evolution apart from the dissemination or the spreading of our genetic makeup or genes. So this natural rape or incidents like rape that is seen in animals, non-human animals, could be attributed to so many of such animals not able to procreate, not able to find mate and partners, potential partners for procreation, and then imposing the sexual desire and this desire to produce on the opposite gender, and then in that process violating the consent of the opposite sex. This is no way an apology of any sort up to this heinous crime. But Randy Thornhill ne bola ki we can always or only overcome such heinous crime when we have a true scientific knowledge of why this heinous crime or this offense happens in the first place. And feminists who just study literary theory and social science and they are unaware of natural sciences or biology especially, they tend to ignore this aspect, and in this process they commit huge blunder, and they engage in disservice to women's important role, because they are not able to have a scientific explanation for this phenomena. And Randy Thornhill said that we are giving a scientific explanation in which we are not negating the role of social psychology and social construct and patriarchy, but we are saying that more than patriarchy, this can be seen as part of the nature also. And unless we become scientifically conscious that this is our nature, because we can overcome our nature. Now we are living in technological era only through overcoming nature or through overpowering nature. So through an understanding of nature and having a kind of a overpowering of our natural instinct, we can overcome a natural instinct to procreate by not indulging in such crime. So only a kind of a meticulous study of sociology as well as natural sciences, such crimes can be overcome. This is what the conclusion was. Yes, Vinay. Excuse me, sir. सर आपने जो पॉइंट बोला था इसी में एक छोटा सा एडिशन था, मतलब मैंने कहीं कोई स्टडी पढ़ा था इसके बारे में कि कुछ एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए लोग जाते हैं तिहाड़ जेल में, वहां जाके किसी रेपिस्ट से पूछते हैं कि भी तुमने उसके मतलब रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि तुमको कैसा फील होता है, गिल्ट होता है, नहीं होता वगैरह वगैरह। तो उसके काफी आउटरीचेस जवाब उन्होंने दिए थे, बट द डिग्निटी ऑफ द क्लास जैसे कि उनको कोई गिल्ट नहीं था उस चीज के ऊपर। तो उसमें ये बिल्कुल। स्टडी में बोला गया था कि ये बेसिकली एक, जैसे आपने बताया कि पावर दिखाने का जरिया है, तो वो पावर जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट के कारण ये सब चीजें हो रही हैं, एंड इसी चीज को एक एम्बेडेड किया गया है
थ्रू जनरेशन, जो कि पेट्रियार्की को, जैसे कि इवोल्यूशन में अभी बात की था हमने। नहीं, बिल्कुल सही बोला। ये तो कोई पेट्रियार्की का कंपोनेंट तो विनय है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है रैंडी। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्की है, इसमें कुछ बायोलॉजिकल है ही नहीं। मतलब आर्ग्यूमेंट ये है ना कि पहले आर्ग्यूमेंट यही दिया जाता था ना कि रेप हैज नथिंग टू डू विद सेक्सुअलिटी एंड हैज एवरीथिंग टू डू विद पेट्रियार्की। जैसे निर्भया के केस में ही ना, निर्भया के जो उसमें क्राइम जिन्होंने करा था वो, एंड देन दे गिवन कैपिटल पनिशमेंट, उन्हीं का इंटरव्यू भी देख लो आप, डॉक्यूमेंट्रीज हैं बहुत सारी, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ये सब, रात को नहीं घूमना चाहिए। सो दिस इज ऑल पेट्रियार्की, नो वन कैन डिनाई दैट। But is it the only picture, or is it the complete picture? Is it the complete picture? The complete picture incorporates both models, जो रैंडी थॉर्नेल दे रहा है और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फेमिनिस्ट पेट्रियार्कल मॉडलिंग है, कि एक कंपोनेंट डेफिनेटली होता है जिसमें हमारी सेक्सुअलिटी का भी एंगल होता है, जिसमें हमें जीन्स को डिसेमिनेट करने वाला होता है, और वो भी हमारा नेचर और कल्चर का जो इंटरट्वाइनिंग है। हमारी सोशियोलॉजी भी हमारी नेचर में रूटेड है और हमारा नेचर भी हमारे सोशियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक है, ज्यादा इंसाइसिव और ज्यादा इंसाइटफुल रिस्पॉन्स है, रादर देन ये बोलना कि एवरीथिंग इज पेट्रियार्कल। देयर इज नथिंग कॉल्ड नेचुरल, नेचुरल इज आल्सो सोशल, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, व्हिच इज आल्सो नॉट ट्रू। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। यस पृथ्वी, यू वांटेड टू से समथिंग? So I'm just saying that Simran is waiting in the lobby. Could you please let her in? Who is waiting? Simran. Sir, Simran. Simran. I'm not able to see her. See all others in it. 33 students are there. Can she just come again? Can she just try again? Can you tell her that? Because अभी मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको पृथ्वी? Yes, sir. Can Yes, you? sir. हाँ, because मेरे को यहाँ पे नहीं आ रहा है कि somebody is waiting। अदर जो मुझे आता था, I always do that. I make sure that those who are waiting can join. But then I am not able to locate her right now. So please tell her that she should try again joining. She can try again so that I can see her and I can let her in. आप बोल दो उसको। Yes, sir. I've told. ठीक है, तो अभी ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम सेकंड उस पे आते हैं, जो सेकंड आर्टिकल है। ये क्लियर हो गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. सो अभी सेकंड आर्टिकल पे आते हैं, जो ल्यूसी फ्रिथ एक बायो एथिसिस्ट है, फिलोसोफर है, उन्होंने लिखा है। वो है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पे। ये भी बहुत, हाँ, यस। Just like that's one thought, sir, that comes in my mind. Usually, usually when such incidents like rapes happen, the female is usually attractive. So the point here is that in case the person who rapes wanted to show the dominance, then he must have also shown that dominance with the people who are older from his age, right? Like probably he could have done it to somebody else. Like, a very important question again, Sameer, you're right. But then it's like a mixed picture, you know. If you see rape also, for instance, in instances of communal riots, communal riots, we all know that in communal riots, women tend to get raped, even old women tend to get raped. There, it's complete domination aspect that's take place. But you are right that in many instances where rape happens, there are many a times that so-called, being attractive is a very subjective thing, but so-called attractive woman or girl tends to get rapes and older women tends to be ignored because obviously. Let's take it as fertile women, fertile females. Fertile women. Yeah, fertile women. And fertile women are young women, no? Yes, Prithvi, yes. Yes, even dogs were not safe now. Exactly. This is the point. So the dogs wala case mein to that is
a psychological condition called I'm forgetting the name, but there is, forget dogs, cops, you know, dead bodies. Even dead bodies are not safe, but that is not a normal condition. That is a psychological, psychiatric condition that people suffer from, and that's called necrophilia. You guys should Google it, necrophilia. Necrophiliacs are those who are attracted towards dead bodies, and then they commit such crimes over dead bodies. So they are a psychological, psychiatric conditions that they suffer from. That's not normal actually, but we are talking about normal conditions basically. So raping a dog or raping an animal, it's a psychiatric problem that many people tend to suffer from. It's not normal. Did you get the point, Prithvi? Yes, sir. So and this girl Simran, has she joined? I'm in a lecture. Thank you. So she has joined now. Yes, sir. Yes. Okay. So now we'll move to another important article concerning the same question of biomedicine and biomedicine and ethics. And this article deals with reproductive technologies. Another interesting article. Reproductive technologies में सबसे important technology जैसे आपको पता होगा in vitro fertilization होता है. Any idea about in vitro fertilization? Yes, sir. Popularly called as test tube based. Yeah. What are they? Yes. What is it? Where two gametes from male and female are fused in a laboratory. Yes. विनय आप कुछ बोल रहे थे? ये सर सेम वही बोल रहा था. हाँ. सेपरेट किया जाता है एग और ओवा को, फिर लेबोरेटरी के अंदर डाला जाता है, फिर उसका बॉम्ब के अंदर बाद में ट्रांसफर किया जाता है. एग्जैक्टली. तो स्पर्म और एग को अलग करके एम्ब्रियोज लिए जाते हैं. एम्ब्रियोज आर बेसिकली एग्स ओनली, बट एक पर्टिकुलर टाइम में जब एग फर्टिलाइज होने वाला होता है उसके बाद उसको एम्ब्रियो कहते हैं. तो एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल सेटिंग्स में रखा जाता है, स्पर्म्स के साथ कॉप्युलेट कराया जाता है, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसको दोबारा उसमें डाल दिया जाता है. सो दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन came up in 1970s, and it produced again the same ethical dilemmas. But the ethical dilemma here was the capacity or the right of an infertile individual. Amrita, you wanted to say something? किसी को कुछ बोलना था? No, sir. Okay. So this capacity of an infertile individual, whether men or women, to procreate, कि आपके पास वो राइट है या नहीं है. अगर आप इनफर्टाइल हो, आप फर्टाइल नहीं हो, आप प्रोड्यूस नेचुरल सेटिंग्स में नहीं कर सकते हो नेचुरल तरीके से, तो क्या आपके पास वो राइट है या नहीं है, ये सवाल आता है. अब उसमें राइट्स में हमने जैसे पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, दो तरीके की कौन सी राइट्स होती है? नेगेटिव पॉजिटिव राइट पढ़ा होगा. क्या फर्क है नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स में? तो नेगेटिव राइट इज कि आपके पास कोई चीज का अधिकार है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कि लोग आपको के लिए परमिट नहीं कर सकते. पॉजिटिव राइट है कि आपको इंटरफेरेंस नहीं कर सकते. यस सर. एंड पॉजिटिव का मतलब है कि आप करने का अधिकार है. आपको किसका अधिकार है? कोई काम, कोई एक्शन करने का अधिकार है. पॉजिटिव राइट. गुड. सो नेगेटिव राइट्स में क्या होता है कि लैक ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ काम करना चाहूँ तो मेरे में कोई इंटरवीन ना करे, इंटरफेयर ना करे, कंस्ट्रेंट्स ना पैदा करे. पॉजिटिव राइट्स मतलब कि मैं स्टेट से या एक इंडिविजुअल से मांगू अपना हक. जैसे पॉजिटिव राइट का एक परफेक्ट एग्जांपल क्या है कि जो हम राइट स्टेट से लेते हैं, जो हम एंटाइटल्ड हैं जिसके लिए, कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू whatever rights we have. And negative rights are कि मेरी राइट्स पे कोई इंटरवीन ना करे, और कोई मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ, unless until or unless I am causing harm, serious harm to others, nobody, no other individual or any entity or state or anyone has any right to constrain my work or whatever I'm trying to do. So ये है. अब जो राइट की डिस्कोर्स आता है यहाँ पे, स्पेशली रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में, उसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स ये बोलते हैं कि, एक रॉबर्टस्टन है, वो बोलते हैं कि नेगेटिव राइट और पॉजिटिव राइट दोनों है.
इनफर्टिलिटी की, मतलब रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज करने में एक तो नेगेटिव राइट है कि मैं एक कपल चाहता है कि उसका बच्चा हो, वो प्रोक्रिएशन में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो प्रो नेटलिस्ट है, वो एंटी नेटलिस्ट नहीं है। नेटल मतलब बर्थ, वो प्रो बर्थ है और आप उसको रोक नहीं सकते। दूसरा जो है वो ये है कि ये एक पॉजिटिव राइट भी है कि आपको, स्टेट को, सबको एक तरीके की आजादी देनी चाहिए कि अपनी लाइफ को फ्लरिश करें। और जो कि अगर चाइल्ड, कोई कपल है, अगर उसका चिल्ड्रन नहीं है तो जेनेटिकली वो डिसएडवांटेज उसको हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक लॉजिक ये है कि आप डिसमिनेट करना चाहते हो अपनी जीन्स। तो ही सेज कि दिस राइट to procreate through artificial technologies, through in vitro fertilization and reproductive technology is a combination of both negative as well as positive, right? अब इसमें क्वेश्चन जो फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट भी आता है, मेन इंपॉर्टेंट वो ये आता है कि क्या जनरली प्रोक्रिएशन का जो राइट हम कह रहे हैं वो बात, क्या वो एक जेनेटिक फुलफिलमेंट या एक जेनेटिक डिजायर है जो हमारा जेनेटिक एवोल्यूशनरी मेकअप से आ रहा है, या फिर बच्चा पैदा करने का हक एक तरीके से हक नहीं है, वो एक इम्पोज करा जाता है समाज की तरफ से, स्पेशली औरतों पर। It's the case that so many times the pressure is there on women and on also on couple men also, but especially on women, to reproduce so that she can attain womanhood, true womanhood. To attain true womanhood, reproduction or giving birth is so important. Now this thing is not part of the natural instinct of every woman. Rather it is part of the natural social patriarchal setup, कि समाज औरतों को मजबूर करता है कि वो बच्चा पैदा करे, और खास करके अगर वो इनफर्टाइल औरत है, इनफर्टाइल लेडी है, देन शी इज अगेन बीइंग इम्पोज्ड और फोर्स्ड अपॉन कि शी शुड अंडरगो सच technological interventions, medical interventions, because only and only after she has given birth to a child she can attain true womanhood. So what do you guys think? Is there a genetic component, genetic instinct to reproduce, or again it is more of a social construct, patriarchal construct, or it is a combination and it is contextual? Yes, Vinay. So in my opinion, it's basically a combination of both. Naturally, every human being, including the animal, and every animal, including the human being, they have this desire or this instinct to reproduce. तो ये बेसिकली हर किसी जानवर में है, चाहे आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, कोई एनिमल है, कोई इवन प्लांट्स में भी हो सकती है, इसी को डिनाई नहीं कर सकते। बट ऑल्सो इट इज अबाउट सोशल कंस्ट्रक्शन, जैसे बताया गया है कि भी स्पेशली सोसाइटी का प्रेशर होता है, नॉट ओनली मेडिकल इंटरवेंशन किया जाता है। पहले के टाइम पे उनको ये जो रिलीजियस इंटरवेंशन की जाती थी, वुमेन को ले जाया जाता था अलग अलग जगह पे, या फिर जैसे कि अगर कोई वुमेन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उसके हस्बैंड की दोबारा शादी करवाना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होती थी। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट कैन बी सेड। True. Sameer, you want to say something? Also, there is no constant conclusion for these things. Obviously, it's a mix of both, but as such, evolutionarily, women have been women are more interested in being mother, like the motherhood thing has evolutionary been there always. But again, the social construct. But the point here to be noted is when somebody is not trying, when somebody is not getting conceived, and then unless they try for reproductive technologies like IVF and all, and even then they are not successful, they actually feel not satisfied. They are like, I wanted to have the child. In that case, that is evolutionary. But if they are getting into reproductive technologies just because the society is forcing them, probably in that case, there is no clear distinction. There is no clear distinction, true. But this point that Vinay raised, कि ये सबकी instinct होती है, but there are so many individuals who consider life to be
who ascribe negative value to birth and life. For instance, there are a group of people called anti-natalist. कभी सुना है ये term anti-natalism? No, sir. Anti-natalists are those who say that life fundamentally is about suffering, and they are also most of the time non-believers. They believe that there is no God, there is no afterlife, life after death is not there, God is not there, and there is something called chronic pain. There's a very important philosopher named David Benneter, who has written a very interesting book called Better Never to Have Been, or The Trouble with Being Born. And उसमें argument ये आ रहा है कि Human Predicament is another book, Human Predicament. उसमें argument ये आ रहा है कि there is something called chronic pain, but there is nothing called chronic pleasure. And he says that there is something called asymmetry argument, which means that there is more pain to life than pleasure to life. And because there is no God, and eventually we are all moving towards death, and we are having all kinds of suffering, including anxiety and existential crisis and all that stuff. So it is a very unethical position to procreate. So they ascribe negative value to birth, and they take their ideas from a very prominent Western philosopher, mainly Schopenhauer. But there are also Indian philosophers who have talked about this, especially ancient Indian philosophers, especially if you look at Jain philosophy, Jainism, if you see, or Buddhism, if you see, and even Hindu philosophy of moksha. Although Hindu philosophy of moksha has metaphysical ideas, and idea of God is very much there, but ultimately moksha में क्या है? मोक्ष में, it is going beyond life and death. Rebirth or birth के component से परे जाना है. So that means it also has a negative component to life if you think it deeply, especially Jain tradition and Buddhist tradition and even Advaita Vedanta Hindu tradition. कि एक तरीके से जन्म अगर दोबारा हो रहा है, atheists, antinatalists are atheists. They don't believe in reincarnation, rebirth. They say कि life में आए हो, कोई मतलब नहीं है, evolution है, evolution is godless, without purpose, without God, blind है, random है, कुछ नहीं है. So हम सफर करते हैं और ethically भी सफर करते हैं, biologically सफर करते हैं, then we just go into a state of eternal oblivion when we die. Nothing remains. So it's immoral to bring life into existence and tend to let it suffer worst kind of cases, including existential anxiety and all that stuff. But even Hindu tradition, which is religious, and Buddhist tradition and spiritual tradition, they also generally don't valorize, as far as my knowledge is concerned, life. You know why? Because life entails suffering. Buddha का main problem क्या था? कि suffering से कैसे निकले, दुख जो है उनको कैसे overcome करें. And in that process he gave many principles and theories, especially middle path, eightfold path, noble truths. Ultimately problem suffering का है ना हिंदू थॉट में भी. तो लाइफ को नेगेटिव, इसलिए एंटीनेटलिस्ट बहुत सारे आज के एंटीनेटलिस्ट तो ये सारे नॉन बिलीवर्स है, बट दे टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, स्पेशली शॉपेनहॉर जो वेस्टर्न फिलोसोफर था, फ्रॉम ईस्टर्न फिलोसफीज इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म. सो लाइफ में एंटीनेटलिस्ट भी बहुत सारे हैं. तो जो इवोल्यूशनरी आर्ग्यूमेंट है कि सब पैदा ही करना चाहते हैं, बिकॉज इवोल्यूशन, अब रैशनल कैपेसिटी कहाँ से आई, सफरिंग की कैपेसिटी कहाँ से आई, सारी पजल है इवोल्यूशन में. It's a very puzzling question for evolutionary biologists. But whatever it is, we are rational beings, we are ethical beings, and we suffer. We are also value-driven beings. And we know, and sometimes we tend to believe that there is no God. If there is no God, there is no reincarnation, then why the hell should I bring people into existence, life into existence, to let my children suffer for 70 years and go into state of eternal oblivion? Because I myself is suffering from that crisis. I've attained that enlightenment, so-called enlightenment, and that rational deliberative thought that I've got right now. So बहुत सारे instances are, so many instances are there where people through rational deliberation reaches that conclusion that life ultimately is meaningless. There is no deep meaning to life. We create our own meaning, but those meanings are created for some years and then we ultimately go extinct. So this is antinatalist argument. So it's not the case that every individual is pro-natalist. What do you guys think about this? कभी सुना था antinatalist position? I'm sure नहीं सुना होगा कभी. There is a group called antinatalist group in Delhi and in Bangalore also, and then there is a movement going on
in West and in some urban centers in India called Human Voluntary Extinction Movement. कभी टाइम मिले तो देखना इसके बारे में, एंटीनेटलिज्म और ह्यूमन वॉलंटरी एक्सटिंक्शन मूवमेंट. बट ये लगा आपको ये एक एबरेशन है बहुत बड़ा. I'll come to the main point now, but this is an aberration. So anybody wants to say something on this? And this is also an ethical question. Has anybody Sir, given any basically thought? antinatalism, sir, does this restrict itself only to the children thing, or does it go to the whole life as it like? No. It is antinatalist. It's not pro-mortalist. See, there are two positions which tends to get often confused. One is pro-mortalist. Pro-mortalist मतलब जो चाहते हैं कि जिंदगी ना हो. Antinatalist ये नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी ना हो, क्योंकि हम तो पैदा हो चुके हैं. Now to kill ourselves is also a psychological trauma that we will, because the moment we are born, we have this thing called will to live. एक will है हमारा, एक desire है, because we are, or that desire itself is biological. Sometimes it's also social, but mostly it is biological. कोई unless कोई ऐसे depression में नहीं है, वो suicide नहीं करेगा, है ना? Antinatalists are not depressed. People tend to psychologize them. They are not depressed. They have a very deep thought and rational thought on life, ethical questions of life, questions on sufferings, moral dilemmas about giving new birth. So they are against new birth. That is what they say, voluntary extinction movement. कि कोई जो अभी है वो रहे, किसी को मारने की वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे पैदा नहीं होना चाहिए, because आगे अब तो जो पैदा हो गया वो हो गया है. And they are pro adoption. They are against procreation, but they would say if a couple wants to have a child, then they should always adopt, because adopt किसको करोगे जो already पैदा हो गया है, rather than to bring a new life, whether through natural means or through reproductive technologies like artificial this in vitro fertilization and artificial insemination. It's actually bringing new life into existence now, and then let it suffer. So this is their argument. So they are not pro-natalists. They don't want people to die. Rather, they want no life, new life to come into existence. You got the difference, Samir? Yes, sir, clearly. किसी का, हाँ विनय, you want to say something? सर जैसे कि आपने बताया कि प्रो मोर्टलिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली डेथ को वो चेरिश करते हैं, तो उसमें बेसिकली वही है कि सर्वाइवर इंस्टिंक्ट आ जाता है. तो इंस्टिंक्ट तो आ जा सकता, सॉरी कम अगेन, सर्वाइवर इंस्टिंक्ट सर्वाइवल कि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो हर किसी इंसान के अंदर होता है, चाहे वो प्रो मोर्टलिस्ट हो या फिर वो कोई एंटी मोर्टलिस्ट हो. एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट. तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से तो इंस्टिंक्ट तो बेसिकली एक ऐसी इम्बाइब चीज है जो हर किसी इंसान की माइंड के अंदर एक रिपोर्ट सेटिंग है बेसिकली. तो हाँ, वो बिल्कुल, इंस्टिंक्ट तो करने की भी है, रिप्रोड्यूस करने की इंस्टिंक्ट नहीं, लेकिन इंस्टिंक्ट से हम बाहर भी जाते हैं ना. देखो, इंस्टिंक्ट तो हमारी ये भी है, हम जंगल के सेटअप में हैं. वैसे वो रैंडी थॉर्नेल कहता है ना कि रेप क्यों है कॉमन डक्स में, बिकॉज अगर कोई फर्टाइल पार्टनर किसी को पोटेंशियल लगा तो ही विल ट्राई टू इम्पोज हिज विल ऑन दी अदर एनिमल, बिकॉज वो जंगल सेटिंग में कोई समाज तो है नहीं, कोई स्टेट तो है नहीं, कोई लॉ मेकिंग एजेंसीज तो है नहीं, बॉडीज तो है नहीं, तो वो अपने पूरी कोशिश करेगा. इन दैट प्रोसेस ही माइट गेट किल्ड बाय द फीमेल एनिमल, बट देन ही विल ट्राई, क्योंकि इंस्टिंक्ट है. बट समाज हमारे को, और रीजन, रैशनल कैपेसिटी, रैशनल डेलिब्रेशन, तर्क, और तर्क हमारा कहाँ से आया ये अलग सवाल है. ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के लिए पजल है कि इमोशंस क्यों आ गए, तर्क क्यों आ गया. वो लोग हर चीज को सर्वाइवल के लॉजिक से देखेंगे, बट बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो सर्वाइवल के अगेंस्ट जाते हैं. जैसे कंपैशन भी कभी कभी सर्वाइवल के अगेंस्ट जाता है, अल्ट्रुइज्म भी कभी कभी सर्वाइवल के अगेंस्ट जाता है. तो बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी इवॉल्व हो गई कि जो हमारे रैशनल कैलकुलेशन के जरिए हमने देखा कि यार इंस्टिंक्ट को तो लॉ बन गया एक, तो वो भी वैसे भी रुक गया. और दूसरा ये भी है कि कंपैशनेट हो गए हमने देखा कि जो दूसरा पार्टनर है, जो दूसरा एनिमल है, उसकी हम राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी इंसान है, वो सफर करेगा, द ट्रॉमा दैट शी विल अंडरगो, ये भी आया ना. तो इंस्टिंक्ट को तो हम वायलेट भी करते हैं. ऑब्वियसली इंस्टिंक्ट से हम ड्राइव होते हैं, इंस्टिंक्ट मेक्स अस ड्राइव टुवर्ड्स अ सर्टेन पाथ, but we also have this capacity. Now, how do we have this capacity? Why do we have this capacity? When did we develop this capacity? Nobody is sure. Not even philosophers or biologists, philosophers of biology or evolutionary biologists, and
Everybody is debating this. But one thing is certain, because we see this every day, that we violate our instincts. That's why we don't commit heinous crime all the time. Whether we violate that in the context of law, but we also violate that in the context of moral reasoning. जो धर्म से भी आती है, जो वैसे भी आती है. Isn't it? Isn't it, Vinay? Yes, sir. Yes, sir. I think you study law now. You are a lawyer, practicing lawyer. Sir. Yes, sir. Not practicing, but still a lawyer. Or you're studying. No, sir. I have studied law. I have completed You law, but I'm not completed practicing. law. Okay. So you know this, मतलब law एक सिर्फ law ही नहीं है, बहुत सारे moral reasoning भी होती है, तो ये violate करती हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी उसको भी instinct को भी violate करते हैं. Now, but just to digress a bit, कि anti-natalist position कभी किसी ने ऐसे सोचा कि हिंदू thought को anti-natalist माना जाए. I don't know whether you guys are believer or not, and that's not also the point. But if you are a believer, have you given it any thought that moksha ultimately तो जिंदगी और मौत से परे की बात है ना? Isn't it? Vinay, are you a believer? If I can ask this thing, if you don't mind. Yes, sir. I'm a believer. Okay. So कभी आपने मोक्ष को ऐसे देखा कि जो हिंदू आइडिया मोक्ष है वो एंटीनेटलिज्म से कितना करीब है? हालांकि एंटीनेटलिज्म में मेटाफिजिक्स है नहीं है, हिंदू थॉट में मेटाफिजिक्स है, रीइंकार्नेशन का आइडिया है, बुद्धिस्ट में भी है, जैन में भी है, सिख में भी है, लेकिन अल्टीमेटली मोक्ष में तो है कि जिंदगी, तभी तो कहते हैं ना कि जो कुछ बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो जिंदगी को या जन्म को बहुत ही ज्यादा उस तरीके से नहीं देखते हैं जितना एक नॉर्मल इंसान खुश होता है जन्म देने पे, जन्म, क्योंकि उसको पता है जन्म है तो दुख है. असल में जो मोक्ष का मतलब है वो जन्म मरण से परे जाना है. कभी सोचा आपने ऐसे भी नहीं? सर, बट इसमें वो तो 4 दे गए ना कि ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, नहीं, वो फिर तो वनवास, देखो, फिर वो मोक्ष. तो वो तो एक अलग-अलग बेसिस दिए गए हैं. नहीं, वो सामाजिक उससे आया है. दिस इज हिंदू सोशल ऑर्डर, सोशल सिस्टम ऑफ, दिस इज नॉट उपनिषदिक फिलॉसफी. हिंदू धर्म का सार है उपनिषद, वेद आर उपनिषद आर फिलोसॉफिकल ट्रीटीज ऑफ वेदास. तो उपनिषद में अल्टीमेटली आइडिया है कि आपको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मासी तत्व तमासी, तुझ में भी वो ब्रह्म है, मुझ में भी वो ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म को एक्चुअलाइज हम कब करेंगे? जब हम अपनी ईगो से ऊपर उठ जाएंगे, और ईगो सेल्फ से हम तभी ऊपर उठ पाएंगे जब हम इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं एग्जिस्ट करेंगे. बट जो सोशल ऑर्डर की आप बात कर रहे हो कि यस पृथ्वी, तो स्कॉन में मतलब आई एम रिलेटेड टू स्कॉन, तो उसमें ये बताते हैं कि लाइफ इट्स दुखालय, तो इतना ज्यादा मतलब लाइफ को लेके इतना प्रीशियस नहीं मानते हम लोग. एग्जैक्टली. इस्कॉन से कह रहे हो आप? लाइफ को एक सफरिंग की तरह देखते हैं. आप कौन से इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो? इस्कॉन की बात कर रहे हो आप? यस सर. ओके, हाँ, सो ट्रू. एंड इस्कॉन फॉलो भक्ति जो लॉजिक है, और उसमें वो भी पार्ट है, आई थिंक विशिष्ट अद्वैत का पार्ट है वो, या द्वैत का पार्ट है. तो इवेंचुअली जो, अगर हम डीप फिलोसॉफिकल रिलीजन की फिलोसफी पे जाए ना, तो जो ईस्टर्न रिलीजन्स हैं वो लाइफ को बहुत नेगेटिवली भी देखते हैं. नेगेटिवली मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन मत लेना उसका, मैं नेगेटिव उस सेंस में नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, मतलब बर्थ को, कि जीवन का असल मकसद है कि जीवन से परे हो जाना. यस सर. और also जो गॉड है उसमें जाके मिल जाना. एग्जैक्टली. कि अभी हम लोग इनप्योर सोल है, तो जब हम प्योर सोल बनेंगे तो हम गॉड से जाके मिल सकेंगे. Exactly. So it is sort of antinatalism. Although antinatalism, जो contemporary antinatalism, वो atheist है, वो ये सब नहीं मानेंगे, लेकिन there is a parallel. In fact, Schopenhauer was the first Buddhist. और Schopenhauer इनका सबका गुरु है जो आज के antinatalists है. Sameer, you wanted to say something? So regarding liberation, moksha and all, sir, actually, as we have seen, liberation is usually defined as escaping the cycle of birth and rebirth, right? So exactly, like when they are not getting the cycle of rebirth, that actually means that we are not taking birth again. That means that we are we will again anti-natalist, right? Like, because they are not allowing the birth again, because they are not allowing somebody else to suffer and they also see this samsara as something as suffering, the whole. हाँ, तो the antinatalists also do that, ना? Antinatalists do this different term.
They are. That's what the point. Although antinatalists are non-believers, they don't believe in reincarnation. They believe that life fundamentally is godless, meaningless. वो तो सारे नास्तिक एथिस्ट लोग हैं. But there is a level of common element. तो जो शुरुआत हमने करी कि जो हर इंसान नेटलिस्ट नहीं होता है. तो ये जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, इसमें एक मॉरल डिलेमा, 2 मॉरल डिलेमा आते हैं. एक तो ये आता है कि भाई जो रिप्रोड्यूस करने की हमारी जो प्रेशर है, is it genetic pressure or is it social? And if it is genetic, then how come there are outliers to it? There are anomalies to it. Anomalies in the form of someone being antinatalist or someone following some religious order जिसमें complete ब्रह्मचर्य है, asceticism है, sex को और reproduction को अच्छा नहीं माना जाता है. Then how come these anomalies are there? And is in vitro fertilization always is a response on the part of society, patriarchal society, to push women and couple for more procreation, because patriarchal society wants women to procreate so that the patriarchal setup and patriarchal norms can be accomplished and women can attain womanhood. So these 3 questions are moral ethical dilemmas within this in vitro and reproductive technologies. एक तो हमने बात करी नेगेटिव राइट की, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे और एक और आर्टिकल लेंगे. लेकिन इतना ही समझ आया कि एक तो नेगेटिव राइट की बात करी, एक पॉजिटिव राइट की बात करी, कि अपना राइट टू प्रोक्रिएशन को 2 तरीके से देख सकते हैं. नेगेटिव राइट की कोई मेरी राइट पे कंस्ट्रेन ना करे, तो मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इन विट्रो टेक्नोलॉजीज पे जाऊंगा, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पे. या मैं पॉजिटिव राइट की तरह देखूं उसको, जो रॉबर्टसन कह रहा है कि उसमें स्टेट मेरी जिंदगी को मकसद मिलता है कि मेरे बच्चे हों, कपल को मकसद मिलता है. सो टू अटेन दैट, to attain flourishment or to attain a deep meaning, or rather at least a meaning to life, couple tends to go for children, and state should provide such, or society should provide such conditions that he or she and the couple can attain that, and that is positive right. And positive right vis-a-vis reproductive technology. So reproductive technologies can be perceived through negative right conception and positive rights conception. Then there are certain ethical and moral dilemmas. One ethical dilemma is that, is it a genetic and evolutionary process that, or rather drive that takes ones towards reproduction or procreation, or is it a social pressure, especially patriarchal pressure on women, on male also, to procreate, and this reproductive technologies are accentuating or making it more prominent through technologies, even in the cases when the couple is infertile or one of the person in that group is infertile. So again, it is accentuating the process of patriarchy or making patriarchy more prominent, this reproductive technology. Or is it a flourishment? Is it giving you an opportunity to live a meaningful life through human flourishment by having babies and children? So this is the ethical dilemma. Yeah, Samir. Sir, just one doubt here. Like, if we see ethics in this, Kantian ethics, actually, Kant is having a very good statement, right, sir? Like, he tells that a man should never be used merely as a means and end. Yes, categorical imperative. So can we tell that Kant is an actually anti-natalist view, because he tells that because according to him, we are using kids as our own intention, like we are bringing kids for our own intention, right? Like, so can we say that Kant is actually telling not to procreate? Because Kant, I'm not sure. Although Kant, looking at historically, historically Kant did not marry and he lived a life of a loner. But Kant was not generally seen as an anti-natalist. Rather, more than Kant, Arthur Schopenhauer, who was also a fellow German idealist, he was the main figure within the group of school of antinatalism. He argued that life, he ascribed negative value to birth, and he argued that life is actually full of suffering and there is no meaning to life. So all these people, David Benneter, Mary, this Emile Chiron, and so many philosophers are followers of Schopenhauer. And Schopenhauer, it's very important to remember that Schopenhauer was highly inspired by Eastern philosophy, especially Buddhism and Hinduism and Jainism. So that's where the anti-natalist connection with Eastern philosophies and Indian philosophy becomes so strong. Yes, so these philosophers go. What is the conclusion of these philosophers? Like the end goal of these people, like just not to procreate, and they end their conversation there, or like they tell us something, like
The ultimate goal is to minimize suffering and like life indirectly stop the life on the earth. Like, exactly, voluntary extinction movement, that's where the movement is कि extinct होना चाहिए humans को और animals को. Life जो है चलती रहेगी, मतलब अर्थ चलती रहेगी, यूनिवर्स चलता रहेगा, यूनिवर्स को तो इंसान एक्सटिंक्ट नहीं कर सकता, बट ह्यूमंस and some people say that even animals, because they also suffer, they should become extinct because they just come to this life in a godless universe, in a deep meaningless universe. They come to this life and they just tend to suffer, and then they just go into, you know, extinction and eternal oblivion. This is what their argument is. okay. Yes, Vinay. सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप ये एग्जांपल दे रहे हैं एंटीनेटलिस्ट पर्सन्स का कि वो किस लिए अपोज करते हैं ये आईवीएफ वगैरह टेक्नोलॉजीज को, तो इन्हीं चीजों को अगर हम एक अलग एंगल से कंपेयर करके देखें कि कुछ लोग होते हैं जो नेचर को फॉलो करने वाले होते हैं, उनका कहना है कि हम केमिकल की बनी हुई दवाइयों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे में ना तो गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज कर रही है कि आप दवाइयाँ लीजिए, ना ही उनको किसी तरीके से कंपल्शन है इस चीज के लिए। सोसाइटल कंपल्शन है, उनकी फैमिली कंपल्शन है कि आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आपको बीमारी हो रही है तो, लेकिन वो उनकी एक पर्सनल चॉइस बन जाती है। तो क्या उसी तरीके से इसको पर्सनल चॉइस के ऊपर छोड़ दिया जाए कि इफ somebody wants to use it or not, गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज इट, लेकिन चॉइस उनकी होगी कि इसको इस्तेमाल करना है नहीं करना है। हाँ, वो तो चॉइस का तो एलिमेंट है, लेकिन ये जो डिबेट है ये फिलोसॉफिकल एथिकल डिबेट है ना विनय, वो गवर्नमेंट का तो है, मतलब वो तो जो आपने बोला नेचुरलिस्ट होते हैं, वो नेचुरली एंटीनेटलिस्ट नेचुरलिस्ट भी नहीं है, क्योंकि नेचुरलिस्ट तो ये बोलेगा कि जैसे नेचर चल रहा है चलते रहने दो। एंटीनेटलिस्ट बहुत डीप थॉट के जरिए नेचर के अगेंस्ट भी जाना चाह रहे हैं, नेचर तो पैदा कराएगी। यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, यस सर। तो आई थिंक आज का क्लास हम रखते हैं, कल हम इसको रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज वाला और जो आर्टिकल नेक्स्ट करना होगा वो मैं शेयर कर दूंगा, वो उसको देखेंगे, ठीक है। और अगर मैं कोशिश करता हूँ कि एथिक्स एंड गवर्नेंस का कोई नोट अगर किंडल एडिशन के अलावा मिल गया तो आई शेयर दैट आल्सो, ठीक है। सर वो किंडल एडिशन उसके कोई नाम वगैरह दे दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, वो मैं शेयर कर दूंगा, वो मैं शेयर कर दूंगा इस व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, थैंक सर यू आपकी क्लासेस कितनी लगी अभी वैसे? मेरी तो है, अभी हैं काफी हैं, 5-6 तो होंगी क्लासेस। ओके सर, सर कल का टाइम क्लैश कर रहा है दूसरे क्लासेस से शायद। पृथ्वी, ये तो आप लोगों को उनसे ही बात करनी पड़ेगी ना, दिस इज नॉट दैट आई कैन डू एनीथिंग, आई एम सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग, मेरे आई एम जस्ट a guest teacher here, so I don't have any authority. Sorry. All right, sir. Sameer, you want to say something? You wanted to say something? No, sir. I was just asking whether it was regarding classes that we said about 7 to 5, 5 to 7. Was that regarding class? It was regarding class. Sir, I think the only 2 more classes are scheduled, but officially. No, but there are more. I did not. They asked me to give another schedule, so I've given that. So there are 5 more. Okay. So at least 7 is there. Okay, sir. Okay. Okay. Take care. Thank you. Thank you, sir. Okay. हेलो, यहाँ पे किसी को प्रैक्टिकल के बारे में पता है? कब से स्टार्ट है?